Hello everyone, welcome to Reflex. This is Cities, and we have with here Rexdreams, belonging in global exports. He is an analyst over here, and he will talk about himself now, what he does over there now. Hey guys, I'm Rexdreams. I'm globally sports Valorant analyst. I've been working with the team for around 2 months. And yeah, it's just been playing tournaments right now. Recently we won the Valorant Conquest Championship. If you guys follow the esports scene, you know what that means. It's the biggest tournament in our region. We played against teams from India, Pakistan, Bangladesh, and all the other neighboring countries. Since we won the tournament in the next month in October, we're going to be playing an event called the APAC LCQ, where we play against teams from Singapore and other regions to qualify for another tournament. So yeah, just been tournaments and work here and there. Yeah, man, congrats on your win over there, and we hope you all the best for the future matches. So yeah, we will continue the matches in Valorant now. We will be shortly there.
Uh, okay. So we do have so for this best of three finals, we do have the veto coming up. It's been done, and it's really, really interesting veto in my opinion. The first map is going to be Ascent, which is honestly one of my favorite maps. I love playing Ascent. It's a really, really great map. And the civil team are going to be attacked while the IT team defend. So historically, Ascent's been kind of like an even map, but I think it leans like 55-45. Like it's a little bit more defensive side. I find it a little easier to defend on. Uh, so yeah, that's that. And it's gonna be really interesting to see what the teams pull out. Like the thing about Ascent, right, is that there's so many, like almost each and every agent is viable on the map, and we've seen in the pro meta, we've seen almost every agent, really, really come out and be played. But obviously, like most teams will opt in for the Astra since how strong it is, like Astra Killjoy, like that's one setup we really, really get to see on this map. And after that, we'll be heading into Haven. Wow, another really, really interesting map because it's really unique based on the way it's structured. Like given the fact that we have the three sites and garage, so it becomes really interesting to see how teams come up with setups to hold that map, and it really becomes important how how your communication is within the team because, like you can really come up with some strong setups to see how you can hold the map. And sometimes it can become an attacker sided map because like it's really hard to hold the multiple areas and it can really be a great map for lurkers. So I'm really interested in seeing that. And then lastly, we have split. Okay, wow, there's three maps like completely different uh in their playset and how teams would approach it. Like Ascent, you can it's different. And Haven, we said about how multiple sight lines and Split is a map with like mid control, and playing around the mid side of the map becomes really, really important to be able to control the pacing and to control how the attackers want to approach the map. I personally think Split is really defensive side, even though like the recent changes made to the map don't do much justice or like don't do much difference to like how the map would be played. It's a really interesting map. I'm hoping to see some interesting agent picks. Like I know everyone likes to see the Reyna, everyone likes to play the Jet, whatever agent comps will be coming out. But I think Split is a great map for Raze. Hello. So hopefully some interesting agent comps. Okay, Maybe some Yoru. We don't really see Yoru come out from any teams. So yeah, hopefully that comes out. okay. Okay, thank you for your point of view. It was great, Unigo. I like the point where you talk about Astra. Mhm. Even after its nerf, she's being used in the meta. So I think Astra will be turning point in these upcoming matches. So yeah, we will go towards the game now. Yeah. So yeah, Agent 6 already in. As expected, the Reyna already coming out from Starix. Not too surprising to see that. And a Raze maybe on Dr. Man. Let's see what they decide to pick. But on the other hand, we already have the Raze locked in and a Sage locked in. Okay, wow, this is really interesting. So has been a pretty staple pick, so no surprises there. And now it's And just to Kakashi and Devil. yes, I'm also actually surprised for Kakashi to pick Brimstone. I thought they will Mhm. pick Omen or Astra for over it. Let's see what Black Beast picks, Astra or Viper. Yeah, really interesting to see the Brimstone, like given like the range, like there have been buffs to him recently where like they've increased the range of his smokes, and he can smoke a little bit like further away. So maybe that's one of the reasons. But I think the main way Brimstone will be used by them is like to use them as like a sentinel, that's to just like lock out one place. Oh, Yes, so yeah, so they do complete the lineup with Jet and Raze, Sage, Brimstone, and so I think Raze and Sage offer a good synergy together with like the slow and the nade, which can be used to get like map control early round in the half. So that's gonna be interesting to see how they play that. So they overall, like even though they don't have a sentinel, they have agents which they can use as sentinels and to like buy space and buy map control. yes, to hold up the side. Completely agreed Yep. with you.
I think the Brimstone Earls will also come in handy for picking out corners of players at B site. Yeah, definitely. It is a little bit of a smaller map. Like there are choke points. Like if you look at A shot, A main, or even like B main or market, like there are few choke points where the Heading Brimstone to the ultimate above. can be really important and can get a few kills. So let's see how you know this map pans out. On the other hand, we're gonna see Reyna and Raze, which is really interesting because like a lot of teams like the Jet on this map and Goblin on the Reyna, if I'm not wrong. Yeah, Yes, yes. I think in and the attacking side they're going to pursue A for site. Astra's already placed their stars on A site and B. Let's see. yeah, it does look like an ace at execute right now, but that's where the kills and the Raze are. This can go really, really bad for them right now. Yes. They are just waiting a little bit, just waiting for the Jet to find some impact, I guess, towards this B main. But it looks like it's going to be a fake that comes out the Boombard, hopefully to bait out a few rotations, but no one from the defensive side is going to move. Now they're all going to move over towards Devil 22 to see to to most likely hit this B set. The recon comes out to mid, which should reveal that this is a fake right now. Let's I see think they're moving how to the B. I think they're defender. going to B. I think they're going to be big trouble. Let's see how he works. Then I got the Okay, first right. pick. The defenders are going to move outside. There. The attackers are taking the side. Spike planted. As I think the defenders have gone low. 2v2 situation. Last player standing. And I think it's going to be now. Yes. Well, Lag great glitch. retake. I think the defenders are overpowering now. Let's see in the forward rounds. Yeah, this is a great retake coming out from them. I think Goblin had a really, really important job. He got the two early kills for his team there, which really helped his team to like get into 3v5 retake already. But the attackers did make it really, really close. Green Ninja got a few kills there, which could have really like turned the tide of the round. But alas, in the end, it doesn't pan out. It is going to be an eco round coming out for the attackers right now, and they're looking to go towards Bgmi and maybe a rush again on the Reyna, who's still holding the same position that she was holding in the previous round. The attackers have decided to force as they got kills in the first round. Oh wow. As the previous round only Reyna No was charge. side. Let's see how does she hold the side. And she goes down. Take flight. Spike Let's see planted. now how defenders take over now. I think that the attackers have got Shock dart. I think the backstab have won them. One enemy remaining. I'm still here, amigo. And they've taken it again. Well, great force play coming out of them. This is really, I think they had a good read on that. That only the Reyna was playing on the B side the last round, and they wanted to hit that again. They did that really, really well. Once they got the kill on the Reyna, it was really easy for them to hold the side because they had the Sage Wall blocking of CT, and again the fact that no one had broken it, it provided them a lot of information. But really interesting to see from the defenders that they only opted for one defender towards the B side. So let's see if they make any changes to the setups coming into this round. They are going to be forced on the eco just to sheriff for 2 bot around to see if that can be used for some damage. And it's going to be a B rush again. Goblin though finds one with the sheriff. Wow, great shot. So what's pushing him? Let's see if he gets again, he got it. Last player standing. And Thrifty. that could have been a good spray transfer, but Goblin is overpowered. I think the attackers are trying again to take a B side again, and as the previous round, Reyna is alone in the B.
Yeah, they are looking to get some early round aim and control with the silver utility maybe. It looks like they are They were food by, so let's see. Launching smoke. And get there with the break. I think the attackers are ready to get inside. Let's see how the race takes over. Last player standing. And there she goes. It's all up to KJ now. I think she needs to go a safe over here. What do you think? Spike yeah, it planted. will definitely be really like important to save this rifle over to the next one and maybe drop it over to stitch a buy around that. It's gonna be really hard task expecting a retake in a 1v4 situation. That's exactly what's gonna be happening. The save is going to come out. But wow, the attackers are really setting a pace here. They've been so aggressive, and the defenders seem to have no answer for that except when they take the aim duels against them. KJ is definitely going for a save over here. Recalling my bot. She's not also going for the exit frags. So one more round for the attackers. The defenders are going to still have the same place Let's see now. as the previous round. Let's see what outcome they expect. That should work. Yeah, it'll be interesting to see what happens this round again. Like the go. attackers are, are in a position where they can set the pace for themselves, and it looks like they are going aggressive again and again. That's what's gonna happen. But they do have 3 people inside this time. There goes the Astra. Let's see how the KJ defense over here. Alarm bot down. There goes one more pick for Trace. Let's see what does she do. They've easily rotated to A side. One enemy One remaining. Wait for me. Does she get a 4K? And she does not. KJ again for 1v4 over here. One more for the attack this time. I think they're overpowering the B side. Let's see. There. There. I think Goblin is calling for 3 strats over here. See what are the outcome they get. There. There. Placing sentry. Oh! Spike planted. Wow, what a great round from the attackers. Last player standing. I think their eco would not come to a fruitful event. I think Esther will have one pick over here. I punish Let's you. see. Let's see.
The attackers are decided for the A side A this time to take. Let's see. Yeah, this could very well just be a fake because the spike's outside Spike, B right now. Yeah. Raze does have operator this time. Yeah, does had seen her hand, but she couldn't get a peek. They're rotating from A and they're going to B now. Let's see what do they do now. Launching smoke. Stim beacon here. They have managed to fake three sides this time. Let's see if they can take this one. Molly. The attacker is taking a side, but let's see the retake this time. Spike planted. Raze has got the pick. One down. Does she get a 3k? But Raze has taken a trade over here. Last player 1v4. standing. And they have won. Wow. Using the brimstone and the raise and sage utility to get into side really easily and it's becoming so hard for the defenders to hold the side. It's really great. Like, you know, executes coming out from them. Just using the utility really well to get into great spaces, and Finisher's just having an insane game right now. He's like 13-6. Really strong coming out from him. I think their economy is also building up great. I think they don't have to look at the economy at least for 2 rounds. Mm-hmm. I think Devil is expecting for a peek over there. Let's see. No, it does not. You will not kill my allies. And she has gone for a race over in the mid. Let's get another one. One dead. And the race has gone to waste. I think they will take the B side now. Let's see the cages POV. Bot coming back. Last player Good standing. tap, but the trade has taken off. Let's see how it is. And the trade transfer does not work. I think it's been a tough time for the defenders, as it is a defending map. Need a drop. Let's see. Okay, the attackers are doing well of getting 6 rounds on the board, and this is going to be eco, so it could just very well mean round number 7 for the attacker. So let's see how this pans out. The defenders, want to push mid this round to hopefully get a pick, but that's not where the attackers are going. The attackers are going with the 5-man hit towards the A side. Okay, well, it's going to be really interesting to see how this round pans out. They all have pushed mid and they've gone to A. Smoke's down. Does the backstab get them? Stim beacon here. They've taken the side very easily this time, without any hesitation. Let's see how does the backstab work. Spike planted. And Goblin gets a pick with a 1D. Let's see if he gets another one. I don't think so. Jets take the trade. We have Astra and KJ and Guidance. Let's see if we can Last player standing. and we don't get a trade anyway. And there goes the match with Devil. 3k. Great execute coming out of the, like really good coming. A Goblin tries his level best, just gets 1 kill, but not enough to win the round. Now they do have the full buy, so let's see what they can do Need with a it. drop. Thanks. I think Raze playing an operator does get them a disadvantage for defending. So what do you think about that? Yeah, I mean, definitely Let's you would make much them rather have a dance. jet for the op or the raise on a rifle so that you can use the satchels aggressively to get picks. But given the fact that there's no jet, like someone has to pick up the operator, so there's gonna be the jet raise, this time around. The attack is again taken the side without any hesitation. But we do have KJ at backside and let's see how this goes. And there goes KJ celled again. Spike planted. And Last we have player finished standing. Raze over here. Enemy punished.
Let's see how Astra does pull a 1v3. He does have an ult. Rest. There's one more round for attackers. The attackers are being really strong and they're being so aggressive, and looks like the defenders have no answer to that. They really need to change something if they want to win a few rounds. And this time around, I think the attackers are going towards the A side. You know, they've been really aggressive and they're keeping up the pace. They haven't really decided to change that. They've also mixed it up with a few fakes, and that's been really working out for them well. We again have raised that shot over here. Again, one player playing at A and 4 players at B side. I think this will go to the disadvantage for them, Let's make as some they don't even have chaos. full buys. So let's hope for the best. Riz heard some people crushing A. Let's see how does he respond to that. Go get him. So what does take one from the ult, but let's see how the Reyna works. Let's see get second one. No, that's Spike down A. and Brimstone is Last going very player well for that. He standing. has taken 3k. Let's see does he get it. No. So what finishes off with it? Last round in the half. That is the last round. I think without the attacker defending that economy, I don't think they can win this round. So I think it will be 2-10 for first half. Let's see. Or we can be wrong. Let's see how the defending are holding. Get out of my way. Watch better. Jetter's gone for the ult after the 12 rounds. Let's see. There's Reyna get it out. And that's One enemy 3K. remaining. That was an amazing 3k from Astra. And I haven't proved wrong. The defenders still have got it in them. Switching sides. Yeah, great half for both sides. That spray transfer of Spectre was deadly to them. Mm-hmm. I think the attackers will try to take mid. Let's see how does it go. Deploying drone. The attackers have decided to take the mid and they caught the mid control, but let's see if they cross the market. Astra and Sova has closed the door to the markets and they have taken CT. The attackers have started to move towards the A spawn. Let's see. Our spike carrier is dead. And there was the first pick Spike taken by down Faris. mid. And he's again moving to the A side now. I think they're getting the predicts if they are moving to A. And there was a great shot by Devil by 1T. Let's see if I can convert it to 2. They do have a Sage who can heal. Sage has Spike taken down, the attacker 25, spawn. and there are One another- enemy and there were remaining. 3k for the race. Let's see if I can do 4. And the trade has been done, and one more round for the defenders. I think the first round was very important for the economy to build up in the defending. So what do you think about that? Yeah, I mean, not only for the economy, but for, like, you know, to prevent, like, the score from going too far away from the. Yes. I think it's going to be a fake on B by the attackers this time. Mm-hmm. And they will plant on it, try to plant on A. Stealing sight. Easily got clicked under, they're going to finish the shot. Let's see how does it pull it off. They have still not got it. And One enemy remaining.
Spike down A. Overpowering them. And they've literally rushed Reyna to their death. Need a drop. Thanks. I think the attackers have gone to the rush A this time. B this time, sorry. Let's see how does Raze and Sova hold this side off. So great start by Raze at initial point. He will not get tagged this time though. Okay. But the defender is he going for no, he's not. But he will take the majority of them. It was a great 3k. Suva is still not spotted by them and is spotted by Astra. Good pick by her. And Brimstone will hold it off. Let's see if Jet can catch them again. I think he has spotted. And they know where they're in mid link. Sage will push from mid towards him to watch it over. It does not One get a enemy 1K. remaining. And the defender wall is down again. I think it's been tough for the attackers this map. Let's Match see point. if they can hold it off for a second. But I think the economy is very low for that. So let's see. They have established me the last round in the attacking. Let's see what they're doing defending. I need to blow something up. The attackers have again decided to take a mid this time. Let's see what they try. And the race is pushing. Spike down mid. But she is only good for. But the defenders also have started to push in mid, taking their advantage. One enemy remaining. They have the defender the bone. Defenders win. And it was a great map, great try from the attackers. So we will go for a timeout now.
So yeah, we have Neuro Doctor with here as a new Hello, caster. Lan. So split the map. It is okay. Two basic quick और picks आते ही रेज of ब्लैक बीच ने रेज इंस्टॉलर कर लिया है. Black Bees full decided है कि रेज उन्हीं को खेलना है and एकदम full आश्चर्य की 80. बात है कि किसी ने डिफेंडिंग साइड में रेज नहीं लिया है. ये मैप एक्चुअली रेज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से. But और देखते हैं. ऑलरेडी सिविल ने दो एजेंट्स लॉक कर दिए हैं कि ओमन यहाँ पे लॉक. ओके सो वी हैव टू एजेंट्स लॉक फ्रॉम ईच साइड. 3 agents lock. Kakashi has chose और to be पहले Raze. रेज लिया ही है किसी ने. हाँ so like ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि Raze is like a essential इस पॉइंट पे इस मैप पे स्पेशली क्योंकि Raze के satchels and boom bots उनके कॉर्नर्स क्लियर करने यहाँ पे पे बहुत ब्रीच लेने का सोच रहे हैं डॉक्टर मन. देखते हैं. एक्चुअली ब्रीच से ये बहुत सारे कॉर्नर क्लियर कर Select सकते your हैं. उसके agent. फ्लैश बहुत खतरनाक है. और कंकस से तो बच के ही रही है. ओके so यहाँ गॉब्लिन वापस रेना लेते हुए इसी के साथ डोमिनिक has डिफेंडर्स ने एक ही ड्यूल से जाने का प्रीफर किया है. देखते हैं उन्हें वो कैसे ले जाता है आगे. I think they are trying to defend now. Okay, that was a sudden sound. मुझे लगता है वो गाली थी बट इग्नोर करते हैं उसे. Okay, might be a glitch scene transition का. So now we have IT attacking and civil defending in the first phase. डिफेंडिंग का सेटअप मैप की तरफ 1-2 रखेंगे. देखते हैं अभी उसके हिसाब से वो कैसे चेंज कर रहे हैं. KJ Okay, they have decided to go B first time. IT has decided. KJ अपना सेटअप पूरा बी पे सेटअप किया है उन्होंने. और उसे अकेला छोड़ के बाकी मिड में स्काई और सेज होल्ड करने वाला है. Okay, दो जन मिड में है स्काई और सेज. So वॉल इज लाइक वॉल तो होने वाली है अभी एंड वॉल के साथ एक पीक लेने का ट्राई करेंगे. अटैकर्स स्काई का एंड प्लान मूवमेंट में अपना प्लान चेंज करते हुए वो फुल ए साइड पे भागते हुए. आई थिंक उनकी नई स्ट्रेटजी होने वाली है ये. देखते हाँ हैं. दे आर चेंजिंग इट. ओके ओमन और रेस दोनों साथ में पीक लगे हुए. कुछ प्री फायर अपने डिफेंडर्स की तरफ से. और एक बूम उन्होंने बूमर देख लिया है. रेस का पहला पिक आते हुए. ओके 30 टैग. ये रेस के बूमबोट के नर्फ की वजह से अभी रेस अच्छा है. देखते हैं रेस डिफ हो पाता है कि नहीं. हील होते हुए यहाँ पे वापस रेस को बिल्कुल अंडर जाते हुए और काकाशी के 2 किल्स फ्री Spike किल्स. down A. कॉर्नर्स क्लियर ही नहीं कर पाए वो इस बार. ओके उन्होंने देखा ही नहीं किस साइड से है. One ओके enemy एक remaining. हेडशॉट दो हेडशॉट. अब ये 4-4 के में बदल पाते आशी हैं. ने वेपन किया इसी के साथ 1 इजी जंप किया. और ये फिनिशर ने खत्म कर दिया. फिनिश कर दिया अपना राउंड. बहुत ही क्विक राउंड हुआ ये. बहुत ही quick. एक्चुअली पता नहीं अटैकर्स क्या अचीव करना चाहते थे एंड मोमेंट में अपना साइड चेंज करके. बट वो फिर से अभी बी की तरफ बढ़ रहे हैं. ओके वो वापस सोच रहे हैं कि जो उन्होंने फर्स्ट टाइम सोचा था वो वापस उसी के साथ जाने की कोशिश करेंगे. इसी के साथ वेपन लोडआउट पे एक बार देखते हैं कि क्या है उनका वेपन लोडआउट. डिफेंडर्स भी उसके 4 प्लेयर्स एटलीस्ट बोनस में जाना चाहते हैं. और अटैकर्स फुल्ली इको पे. ओके दो प्लेयर्स ने शेरिफ किया है आज रोकते हुए. बट वो धीरे रोकेगा एज ए नर्व की वजह से. देखते केजे से हैंडल कैसे करते हैं. केजे का रीजन ना था उससे केजे बहुत केजे का स्वॉर्म गेन भी बहुत फट चुका इफेक्ट पड़ा है है. की वजह से. अटैकर्स मिड में घुसते हुए. ब्लैक भी स्पीकिंग है बाय द वे. यस कुछ स्काई ने दिया. ओके एक काकाशी सारिस को लेते हुए बूमबॉट गया काकाशी की तरफ से. नहीं जा रहा है. ओके वन शॉट One enemy गॉब्लिन. remaining. प्रॉब्लम पे क्या गॉब्लिन ले पाएंगे. ओके राइट क्लिक होती. ये अभी फ्लॉलेस राउंड हो पाता अगर रेस थोड़ा सा सब्र रख पाते. Help a girl out, would ya? Cheers, mate. हेल्प कर ना भुजिया. Help a girl out, would you? Cheers, mate. Sky and Astra are known for their absurd language.
अटैकर्स अपने स्प्लिट होने वाले हैं अभी. देखते क्या उसे हैंडल कर पाते हैं. Okay, they are planning for shit. They are buying this round. सेज मिड वॉल करने ही वाला है और ये बॉल तोड़ेंगे लोग. तोड़ने वाले हैं. बट क्या उनका मिड पिक कंट्रोल कर पाएगा? देखते हैं. Okay, और ये शॉट और ये उन्होंने ट्रेड नहीं ले पाए. दोनों का एक Hawk out. Blinded. confirm cleared mid. Healing over here. Okay, यहाँ पे स्काई की हीलिंग आते हुए. They have बट 3 recovered their health. के हुए फुल बैक के साथ भी फिर भी अपना फर्स्ट किल कन्वर्ट नहीं कर पाया अब तक एटली. स्काई लो है. पता नहीं सेज उसे लीक क्यों नहीं कर रहा. और ये ओमेन का फ्लैश और पुश डिफेंडर पुश करते हुए. Down you go. Okay, kill. ये ट्रेड हो गया. Trade. Spike down Upper mid. skill. और अटैकर्स ने अच्छा कमबैक. Okay. No Now charges. this round could be in the favor of the attackers, but उन्हें पोजीशन नहीं पता है. और ये रेस बैकस्टेप दे रहा है. अभी देखते हैं वो. One enemy remaining. Spike down A. और ये Okay, Kakashi. Boom what is the star? काकाशी For का race. प्रदर्शन पिछले मैप में भी अच्छा रहा है. देखते क्या उसे कंटिन्यू रख पाते हैं कि नहीं. Kakashi has been overall doing wonders for his team. Rays, picking up Rays. Camps, It's like- camps. They can't even make a dent. Okay. What do we have here? Another eco round from the attacking side. Spike down IT mid. is really struggling to keep up their pace for the game. Seek them out. Found them. Sky ने अपनी को मैच Don't keep them back. क्योंकि लोगों Okay. को तो पता है लोग क्या ट्रेड ले पाएंगे. One enemy remaining. Blinded me. अरे कीजिए को राउंड खत्म हुआ. बढ़िया स्किल है. Recalling. Swarm grenade out. Okay. Now what do we have? और डॉक्टर मन ने हमारे अटैकर्स को Time टाइम दिया है. out. 1 मिनट का टाइम आउट है हमारे पास. So let's have a cam look of them. What are they planning? क्योंकि सब अपने अपने घर पे बैठ के प्लान कर रहे हैं. So how are they coordinating? Let's have the cam first. Okay. अरे ग्रामर खत्म हो गया Placing है. swarm फिर grenade. से हम अपने तरफ गेम की तरफ बढ़ चुके हैं. Alarm इस bot बार बी की out. तरफ जाने का सोचा है. उसका एक प्लेयर वापस से इधर भी जा रहा है जो कि लर्क करने के लिए ट्राई करेगा. Stealing sight. हमारे मिड बॉल ब्रेक करते हुए लेकिन इस बार अग्रेसिव जाने का प्लान किया है. और ये पहले पिक में कनेक्ट करते हुए स्ट्रीक्स को यही कमबैक पॉइंट करने वाला है. Yeah. उन्होंने मिड कंट्रोल ले लिया है और डिफेंडर्स को पीछे फेंक दिया है. क्या पे Swarm grenade out. KJ has no idea. It has been an attacking side, taking the advantage here. Spike planted. They have planted on the B side, and अब देखते हैं retake के लिए क्या करते हैं. Sky ने blind करा है. They don't Player know. standing. और Okay, ये डायरेक्ट गॉड मोड में क्या ये एस Star X. आएगा. और ये एस Must I do everything? ये मुझे लग Star रहा है X. ट्रिगर हो गए हैं और हमारे अभी Changing, game changing. गेम चेंजिंग. They have won the first round in the second map, and they are in lead with
they're in loss with one match. So let's hope they can recover and we can see a third map. एंड आई थिंक ये टाइम आउट उनके लिए काफी अच्छा रहा था. They have sorted things for themselves and hope कि और उन्होंने इस बार बी पे होल्ड रखने का डिसाइड किया है अटैकर्स ने. और यहाँ पे पहला पिक मिल चुका है डिफेंडर्स को. okay, turret doing its work. Peak kill. परफेक्ट प्ले बाय गॉब्लिन. बट केजे के यूटिलिटीज ने रोक दिया है. बट यहाँ पे हमारी सेज वापस से जाती है. They are attacking from two sides right now. Okay, Sage. और यहाँ पे 3v2 और यहाँ पे पता नहीं केजे यहाँ पे होल्ड कर पाएंगे कि नहीं. बट 20 Okay, Dominic and Goblin taking the trade, taking the B side here right now, and it's easy. वो retake 3v2 का situation है. So let's see कि वो क्या strategy choose करते हैं. They have one player in the side, two players in the side, and Dominic wait कर रहे हैं. पता नहीं फ्लाइट्स की तरह उड़ के वो ट्राई करना चाहेंगे कि नहीं. ओमेन ने अपना स्मोक डाला है मेन में. Okay, there you said it. Last player standing. और ये ट्रेड ले पाएंगे कि नहीं. और ये ट्रेड हुआ है. Off your feet! और ये ब्रिम अपना अल्ट यूज कर रहा है. One enemy remaining. और रेंजिया ने फ्लेक्स निंजा की तरह एकदम ही ट्रेड किया है. दो अल्ट वेस्ट किए हैं उन्होंने अपने इस बार अटैकर्स में. They have utilized it, I would say. They have won this round, so nothing in vain if they won a round. बट अगर आप देखने जाओगे तुषार तो वहाँ पे उनका टाइम ऑलरेडी अप हो चुका था. उन्हें अल्ट यूज के बिना डिफ्यूज नहीं हो पाता. When you are in loss for a match and 2 rounds, you don't want to take any kind of risk in this situation. They are just confirming their part. They are just making it extra sure कि वो कोई भी चीज मिस ना करे, किसी भी कोई लूपहोल ना रहे उनके टीम. बराबर. So सबके पास rifles. You can see Devil has the Launching bulldog now. smoke. Stim beacon here. Civil this time इस बार is kind of in a bad बट situation. स्काई लग रहा है कि अपना बेस्ट नहीं कर रहा है. और ये ट्रेड और ये Okay, और उन्होंने bad पहला is- pick निकाल Spike लिया. down mid. स्पाइक अभी मिड में गिर चुका है. देखते हैं सेज कैसे उस स्पाइक को वापस लेते हैं. Okay. Okay. और ये स्लो और बाउंड That हो was- चुका है उनके कुत्ते के ऊपर से. It's slow उसने this पहला point. pick निकाला है. तो सेकंड में करना और ये दूसरा किल Okay. उनके हाथ में. Black Same B is spike भी ले लिया है. going. Black B is going full on. They are attacking A right now, and they have their players set it into the side. One back side, one CT, 2 और CT. ये दूसरा Black ace. B is with an ace. I think they are just planning for aces for everybody right now. Yes. कि और भाई, तीन लोग बाकी let everyone have an ace, then we'll start playing for the team. अभी ये तीन प्लेयर्स बाकी है इसके. देखते हैं. So let's hope कि सब अपना अपना ace complete करेंगे. We are gonna see everyone's aces right now. So looking at the score right now, it is kind of in the equal, we say, but still they have one round to go. IT have one round to go. They clear 3 किल टर्न हो पाएगा. finish. Black Beast is low on health. He is going to get some. Okay. ये रेस जीतने में वापस गए थे पर वो वापस लगता है कि वो ए पे टेक करना चाहेंगे. पर आप अगर मैप में देखें तो डिफेंडर्स के मैक्सिमम प्लेयर ए पे हैं. स्काई वापस रोटेट कर रहा है. उन्हें लग रहा है सस्पिशन हो रहा है कि बी पे भी. Okay, Dominic छुपके से एंटर ट्राई कर रहा है कि वो बी पे एंटर ले पाए. बिग में एक मिल चुका है अटैकर्स को. और ये डेविल का खतरनाक ऑपरेटर शॉट. Okay, now they're trying for mid control. They have Sage is in the mid. It's now Dominic is in the mid. Goblin as well. क्या डेविल एक और कितने Black B is taking a kill at A. रेस पूरी तरह साइड So में. okay, क्या लग अभी दोनों is he gonna see? Is he? फुटस्टेप Is सुन नहीं आया. इसके लिए रुक चुके हैं. बट काकाशी के साथ One enemy remaining. okay? There's one kill. अब उसे Now पता है it's- कि पता नहीं कि स्काई उनके साथ में सिटी में है. क्या देखते हैं कि उन्हें पता है. Okay.
Are we gonna see a sheriff one shot, or is it gonna be Vandal? Dominic is with the spike, and Starix and Black Beast are just searching for him. भाई तेरे को मार के ही छोड़ेंगे. एक्चुअली प्रॉपर्ली हैंड भी नहीं कर रहा है. अगर यहाँ पे डेविल अपना एक वेंडर सेव करने को कर लेते हैं तो फिर भी उनका एक इको Satisfy हो जाएगा because they are low on eco right now. They have to, because next round अगर उनके पास rifles के होंगे. Nothing. No exit packs. डिफेंडर्स के पास अभी स्काई और ओमेन की अल्ट है. क्या देखते हैं वो उसका इस्तेमाल कर पाते कि नहीं. अटैकर ने फिर से बी लेने का डिसाइड किया है और रेज एज यूजुअल लर कर रही है. देखते एक पर वो फिर से मिड आ गए उनके साथ ज्वाइन होने. देखते मिड कंट्रोल से हो पाता है कि नहीं इस बार. Yes, it would be. मन जी ने अब तक बाय really cool to see. कर लिया है. They are trying for mid control this time, I guess. 4 mid, 1 B. Breach going with. They have okay. They are blind. Destroyed. बट रेज ने कुछ करते हुए ब्लैक 2 more in the vents. Okay, they have full control of B right now. No one is at B side. क्या ये पॉसिबल है आपको लगता है? Retake is. One dead. Spike We cannot planted. say because Devil we have. It's only up to Devil and Green Ninja. Last player standing. Okay. Now 1v4 situation, kind of. और ये ब्लैक बेस पे फुल बेस पे. Satchel out. I think it's time for Satchel out. Just confirming their victory. They are trying. Like they don't want to lose this round at any cost. So they are just going try hard this time. And that's what we expect from our defending champions, IT, BEIT. There. They have won against the last Reflex 2.0. So we expect them to win this round also, this time also. उन्होंने फुल ए स्टैक किया है फॉर रश. बट क्या देखते हैं वो मेरे से जज कर पाते हैं कि नहीं. Bomb buddy out. पहले पे होता तो उन्होंने Okay. और रेस ने Boombot OP again. Boombot OP. और ये से एक पिक निकाला और ये कन्वर्ट नहीं कर पाया ट्रेड You ऑफ. will not kill my allies. और ये वापस को रेस Raise आते हुए यहाँ पे raise आते हुए. Okay, now they are 3v5. Okay, 2v5 here. Planted. Okay, nice. Now, what we have? Skillers taking 2 down. बट टेकिंग 2 डाउन. Last player standing. So this, One okay. enemy एंड दैट वाज द remaining. फ्लिक ऑफ द ईयर. और ये स्पॉट हो गए हैं. क्या Will they be करेंगे? trying? They don't know the positions. Okay, अच्छा स्टैटिक्स के होते हुए. easy peasy. Now, IT is in the lead right now with 6-4. Still being 1 match down. आई थिंक अटैकर्स ने इस टाइम अच्छा कन्वर्ट किया है अपने आप को 4 राउंड हारने के बाद. I guess the timeout has changed the flow of the game for them. उनका वो The timeout was crucial and at the right time. उन्होंने पता नहीं क्या किया है. हम डेफिनेटली आफ्टर गेम उन्हें पूछेंगे कि उन्होंने क्या बात की है. ऐसा क्या मोटिवेशन दिया डॉक्टर मैन ने. का इंसेन मार्शल पिक हमने वो मिस 1 shot match. Okay. और शायद से फिर से एक पिक मिल सकता है बट वो नहीं जा रहा है उस बार उस रिस्क के लिए. ब्रीच भले उधर बाहर घूमे फुटस्टेप्स के लिए बट उन्होंने मिड रोटेट करके ए ले लिया है और ये बीच में दूसरा पिक Okay. ले लिया अपने A side से. is empty right now. No one is at A. Sky is coming from the cubes. Okay. CT to Black Beast. So trade off लेंगे. I think उन्हें पता नहीं Now कि we have Time to hunt. Devil is Not over. Healer.
Spike planted. Rez आते हुए defending team से and heal भी साथ में. So Sky has no abilities right now except for a One little of the enemy heal. remaining. Off your feet! Okay. और ये अपना थंडर यूज करते हुए देखते हुए एक कन्वर्ट कर दिया पर इसके ऊपर वो Not, नहीं ले not, पाएंगे. not. ये राउंड डिफेंडर्स की चोली में. Gun here. इसी के साथ Last guys, round before the switch. last round. Let's look at the economy of both the teams. Like, इकोनॉमी okay, they still can buy. Dr. Man is at a great eco right now, so he can buy for his teammate as well. अटैकर्स ने इस बार ऑपरेटर लेने का डिसाइड किया है. ब्लैक बीच देखते हैं. Black कर- Beast क्या has करेंगे इस gone with an operator. But operator was only a good choice for the defending side this time because you can just stop off from B and A Haven as well. एक लेना शुरू हो गया है. आई थिंक वुमेन फुटस्टेप. One down, Kakashi with its magic again. Okay. Green Ninja कंकस में down. Green Ninja बहुत low है. Spike down A. और ये अपने Okay, अपडेट के एनिमेशन. Black Beast has taken down finisher. No doubts. It's a 2v3 situation for a little difficult for the attacking team. Okay. They have got the recon for themselves. और ये अल्ट से Kill लेते हुए यहाँ पे 2v2 situation. Out of charges. क्या वो सेज के पास heal है? केजे और स्काई क्या फुल एचपी stage? होते हुए तो शायद से ये KJ round is में जा like- सकता है. Last player standing. Okay, No, okay, I'm okay, wrong. okay. Now we have a 2v1 situation. उनके पास कोई आइडिया नहीं है. So they are just switching it off स्काई ने from A to B right away. Fire in there. But 30 seconds. they have already heard the sound. उन्हें पता है जैसे कि ये यहाँ पे ही है. यस और उन्होंने ये Black B going Switching with sides. the और ये एक अच्छा कमबैक अपने आईटी की तरफ से उन्होंने 4-0 से 5-7 स्कोर पहुंचाया है जो कि मेरे हिसाब से बहुत उम्दा बात है. अच्छा comeback है उनके लिए and much needed comeback था ये. यस Because everyone is expecting a lot from the defending champions right now, BEIT. ये भले डिफेंडिंग मैप होते हुए देखते हैं इस बार वो क्या कर पाते हैं. Let's see what tactic they use. हम Sage mid wall expect कर रहे हैं यहाँ पे फिर से, and this is gonna be a boom bot or a Here. grenade coming with them. अनफॉर्चूनेटली मिड में एक ही जनरल ने वॉन किया. सेज बैकस्टेप Okay, we are expecting a B rush, B full rush. They are just going all out. They have Kakashi has taken out Starix right now. Okay, a Goblin is there, but Dominic has taken out Finisher right now. Goblin taking up Goblin and Beast, Black Beast being at the B side there. The attacking has chose to retreat from B right now. They are coming to mid. Dr. Man going with the blind, right spot on at the time with the footsteps. Is he Devil and all three are in mid. Can he expect Kakashi? Can he take out Kakashi? Charges. No. Not right. Scarless. Okay, the KJ has entered the A side right now. They are going all out. Can they take on one? Okay, they have taken out one. Dr. Man has been, Dominic has been traded off by Devil. Okay, now it's a 3v3 situation. Totally clear. Is they expecting? Okay, Dr. Man has taken out Kakashi. It's a possible situation. Okay, the Grey Ninja has taken out Dr. Man. One enemy remaining. Now Goblin has taken out Grey Last player Ninja. standing. It's come out to be 1v1 situation. What are they expecting right now? It's okay, Devil with one shot headshot with the ghost. That was a good round for the attacking team. They have सेल वाले इतने totally retreated from the B. That was a good strategy, isn't it, Raj? To retreat after playing so deep into B, ये रीड not होना not जरूरी है getting मेरे it. हिसाब से. ये उन्हें वो अगर उसे वो रीड कर लेते कि वो क्रॉस करके आने वाले हैं तो ये शायद से वो जीत पाते.
Yes, they should have come back to A little soon. और ये बी Then में they हाफ might पुश have किए been हुए able. Okay. He is all completely broken तो off. उन्हें एबिलिटी से थोड़ी देर रोका जा सकता है बट देखते कब तक रोकते हैं वो Healing coming right away from Sky. पीछे सेज Yeah. कंप्लीटली Finisher. The defending team having no idea finisher are going that deep. One enemy remaining. आई थिंक ब्रीच होल्ड करने वाला है बट उन्होंने फुटस्टेप सुन लिया अपने सेज ने Okay. जहाँ पे Your कनाडा tactics failed. No. It's gonna be a और ये हल्का सा टी बैक होते हुए clean sweep. 7-7 is a score right now. Let's hope they take another tactical timeout and get their things straight again, and we could see them in form again. Anyways, we are still 3 aces from the BIT team. We were expecting them, each player, to take a little risk. और ये अर्ली कंकर Yeah. ब्रीच का Early concuss. We are expecting it A. किल नहीं ले पाए बट ब्रीच ले लिया है यहाँ पे किल Okay. हो चुके होते हुए Devil has taken off Dominic right now. Black Beast. सेज अपने they- बॉल पे होल्ड करते हुए नहीं मिलेगा Everyone out on A right now. अरे ना फिर भी बी होल्ड कर रहे हैं उन्हें एक्सपेक्ट है कि वो वापस रोटेट करेंगे इसके लिए बी होल्ड कर रहे हैं Reina don't want to give any chances. Okay, Reina is right now because we can see the enemy team switching back to और ये B. सेज ने एक और pick ले लिया है Starix has taken on Kakashi. Kakashi it's at a big kill right now because he has been obliterating the enemies. रहना भी रेडी है उनके बी के एंट्री के लिए उन्हें फुटस्टेप सुन लिए हैं Still in sight. They have no idea कि they are expecting someone. They are expecting someone. Spike Nice. down B. 30 seconds left. One enemy remaining. Okay. और ये गॉब्लिन नहीं I've Again, got your Devil trail. taking on. Okay, Starix going for Devil right now. Starix picking on 2 main enemies from the civil team. Again, we have back on. Goblin going to be as always. Breach going with starting concussion. यूटिलिटीज ले नहीं पा रहे हैं उनका इकोनॉमी थोड़ा वीक लग रहे हैं पर मुझे लगता है Yeah. इसको अल्ट करना चाहिए Yeah, they'll go definitely go for an art right now, but this time it's a mid push. This time it's a mid push. Okay, Devil taking on Black Beast. Squad. Time to hunt. Okay, what we have with us right now. Okay. और ये बॉल के ऊपर जाते हुए उन्होंने पिक निकाल दिया है सेव तारिक। हो गया है यहाँ पे काका से एक और पिक निकाल Talking about diffs, ब्रीज they are still denied that man. Dr. Man. Okay, blind running. It was a fraction of second difference. यहाँ पे Blind एडमिट का नहीं पता कि डिफेंडिंग में ऑलरेडी एक या एक बैठ चुका है बट रेज उनको 200 Will Sage be able? और यहाँ पे रेना लेग पिक Will ले पाएंगे Sage. आई थिंक सो यस Goblin going out. Okay, we can see the Sky and KJ rushing out to A. सेज की लोकेशन पता नहीं है क्या वो प्रेडिक्ट कर पाएंगे Okay, now they have cleared 30 their seconds intention. left. You A जा रहे हैं with that blind. One enemy और remaining. ये डेविल का 3k रेना अभी भी फुल एचपी है क्या वो कन्वर्ट कर पाएंगे अभी यही मौका है अल्ट मारने का This is the right time. Yeah. Okay, some HP down to the wall banning. Okay, Style is taking out the Goblin with that peak.
It's 8-all close call match right now. If Civil takes this round, this match, it's over for the BEIT, and they have to give up their Valorant champions title that they have gained in the Reflex 2.0. So let's see what happens with right. I think डिफेंडिंग के लिए इको रहेगा, उनकी इकोनॉमी फुल डाउन हो चुकी है. Should we expect? Okay, an early kill, goblin has been taken down. They are not ready to give the space. Attacking KJ, getting on. और इसे ब्लाइंड होते हुए पिक नहीं ले पाए. Last player standing. Okay. Got you. Right click okay. Concussing. Blinding. Okay, wrong time. Spike planted. Okay, while we can see Omen is trying to give a lurk from the mid, so no need for that. Devil OP has taken down the man to clear the round for themselves. Okay. This is a crucial time for BIT right now. I They got should you, take on. okay? अटैकर्स ने फिर से बी लेने का डिसाइड किया है. रेज यहाँ पे लर्क कर रही है. यार देख तो एक पिक भी मिल पाता है कि नहीं. So it's moving on to the A side, finding it empty. अभी उसे आइडिया हो गया तो वो पीछे आ गया है. Okay. With that spray we have. ब्रिम को थोड़ा सा आइडिया लगा है और एक मैंने पिक निकाल लिया. I think this is very much into it now. Spike down. I am back. The spike has been planted on B. पिक निकालने की ऊपर से बड़े स्मोक के कारण विजिबिलिटी पूरी जीरो है. Okay, Dominic I've got move your started trail. on Malav. और ये वाला फ्लैश हो गया है 2 प्लेयर. One enemy remaining. यहाँ पे 1v2 सिचुएशन होते हुए Last player In the standing. 1v1 situation. Confess होते हुए. No Lucas. वो ट्राई कर. But. Spike won't be able to defuse the spike right now. So again, the round is in hand of सिविल civil. करते हुए. I think ये टीम इतनी इजीली गिव अप करने वाली नहीं है. They will fight their fullest. That's what we expect at this stage in the game. This is the finals, of course. No team is gonna give up that easily. Okay, we can see the attacking team starting onto the B, so it will be a B straight push. They are just playing with the W gaming, going all out in the start. Okay, Raze has been taken out by Kakashi. Goblin has been taken out by Devil. Spike planted. क्या लगता है ये राउंड फ्लॉलेस हो पाएगा? नहीं, मन ये Cannot नहीं देंगे. say. Last player standing. और मन तो Close call of Samantha. और एक अंतर हो गए थे. क्या डेविल इसमें किल में कर पाएंगे?
आई थिंक ये Okay, दूसरा let's टाइम go. आउट है डॉक्टर मन की तरफ से. आई थिंक यही टाइम आउट का टाइम है जो अभी उन्हें वापस से कम बैक करवा ला सकता है. क्या कहते हैं दूसरा? Exactly. We have seen this similar in this map only while attacking, and that brought a great change in their gameplay style. So let's expect कि वो similar kind of fashion में कुछ changes ला पाते हैं इसके अंदर अभी. Okay, the last 20 seconds after the timeout. Thinking out a strategy right now. BEIT. Due to censorship अब उनकी कॉम्स आपको नहीं सुना सकते. नहीं तो Can I get a drop? Thanks. yeah. अटैकर्स फिर से Early push push कर रहे for- हैं. Yes, we can also see an early B push right now. Raj. Yes. So I think they're not giving a B. is it gonna be the same? उन्हें लगता है कि वो वही स्ट्रेटजी से वापस से बी रीटेक ले सकते हैं. देखते हैं क्या होता है. Yeah. रेस का प्री अल्ट होता हुआ है बट उनका वेस्ट जाने वाला है क्योंकि कोई एक भी आदमी ये नहीं आया है. और इसे बैकस्टेप कर रहे हैं इको से. और एक गॉब्लिन ने पहला पिक Goblin taken out. You Akash. will not kill my allies. और ये ब्रीफ के अल्ट में सब फंस चुके थे बट फिर भी शेरिफ वर्सेस बचता Nightmare's over. और ये Last ब्लैक player Okay, one head. Kakashi down. Black. It's on Black Beast right now. Spike planted. आई थिंक ये नहीं हो पाता है. Kakashi finishing it off after getting raised again. Match point. आई थिंक ये मैप भी सिविल के झोली में जाने वाला है. एंड आई थिंक So with this map is the title for the Valorant champions for Reflex 3.0. I think they did very good. The IT has बहुत ही been close very call match. Yes, this बहुत ही was a close call match. map था ये. This was a close match. The score was 8-8, but the Civil counter-attacked them. They're trying for A this time. They are now just clean sweeping the BIT team without any doubt. मन के पास अभी डेविड ने Black Beast taken out. shot. You should run. But Kakashi. One enemy remaining. Kakashi just and it was the one going on. flawless नहीं हो पाएगा, but sadly After man with the op. Taking two with the op. क्या ये 1v3 possible है? I have seen SK Rosses taking this out. Concussing! Concussion going out. Will he go for वो क्रॉस कर चुके हैं. वो जंप कर रहे हैं साइड में. okay? Final Attackers kill. win. What an end! What an end! What an Yeah, end! it was a good game, Healing over here. but unfortunately only one can be the winner, and it's this time going to be Civil, our Reflex 3 Valorant title. Congratulations to the Civil team. GG's boy. Congratulations to the Civil team right now. They're gonna celebrate right away for this win. So we'll be right So back with let's- another game shortly.
ठीक है. Hello, good afternoon, each and everyone present over here on the live stream. We have someone special with us right now. So before that, my name is Abhishek Mishra, the guy who lost in the Valorant match right now. Along with me is the co-host, Sachet, engineer Sachet. Say hi. And today with us we have Mr. Siddhant Joshi, aka so SATUL Sid, who has been a part of various esports organizations and has a lot of experience playing and managing teams across titles. He did his bachelor's in business administration from University of Bedfordshire in management and operations. He has been a part of Oblique Gaming, Neckbreak Gaming, Entity Gaming, and eventually joined Team Solo Mid, or as we know it, TSM Entity, as a manager. Later went on to Samurai Esports and now currently in SATUL. Sir, we welcome you. Thank you. Thank you. Thanks for having me. All right. How did you eventually get into SATUL? Like, how did the contract start? Because as we know, in the pandemic situation, SATUL turned into a kind of content creation house. Correct. So we just wanted to know that how was your transfer from Samurai? Just agreed on to. This is just a personal question, and then we'll start on with the formal questions. So Samurai was just like a temporary thing, to be honest. It wasn't something that was official. I was just advising and helping them out. But after my separation from TSM, I guess Soul was the perfect timing because maybe last year I would have some different opinions, but this time Soul had a good lineup as well. Some players that I felt I could work with, like Mavi Scout, Mortal, Viper, Rega, all of them players with potential. And I guess it was just timing. Like when I separated, they announced their lineup, and I've always been on good terms with the SATL guys. So I just picked up the phone, called Thug up, and 3 days later I was in Seoul. Wonderful. All right. Okay. So here's my first question for you. So what does it take to become a esports player or manager if someone wants to go for it, like in a career? For a player, the two most important things are dedication slash hard work, and mental strength. Dedication, because this is such a cutthroat industry where there's so many people playing in India. There's millions of players playing in India. There's millions of players constantly training hard every single day to beat you. So dedication and hard work definitely is the most important. Like there's no such thing as God gift. You're not born with the skill to play esports. It's just hard work. Anybody can become a great player. And mental strength also, because there's a lot of ups and downs in this industry. There's one event every 2 months or so, and if you lose that event, there's nothing else coming up. So there's a lot of ups and downs. So you need to have that mental strength to sort of keep yourself going, because you're like a 18, 19-year-old player usually when they first start playing. So mental strength, dedication, definitely two of the qualities that you need as a player. For a manager, just he has to be very adaptable and a people person, nothing else. There's so many different personalities I have to manage, so I have to make sure I adapt myself according to the people I'm talking to. All right. So what are the roles of a manager in an esports organization? If you could just define them very briefly. So basically, I have to make sure the player has the only thing the player has to worry about is playing the game. Everything else needs to be taken care of by me. For example, if they're eating right, if they're waking up on time, if their scrims are scheduled properly, if they are traveling somewhere, for example, I make sure the travel is set up in a very comfortable way. So, for example, Soul has a lot of content creators as well. I have to make sure that their shoots and their content creation is well balanced with their practice times and their tournaments, sponsorship, branding, partnerships, generally those things. So basically, all the player has to worry about if I'm around is about the game that they have to play, and nothing else. Got it. Sajid, you want to take the next one? यस ऑलराइट. तो आपने अभी बोला कि सोल की जो टीम है पूरी, वो कंटेंट क्रिएशन और ये सब में मिक्स रहती है. अनलाइक योर एक्स टीम सिर्फ प्योरली फोकस था कॉम्पिटिटिव में. आपको मजा किस में ज्यादा आ रहा था दोनों? मतलब इफ यू कैन कंपेयर एक्स टीएसएम और सोल, आपको मैनेज करने में सबसे ज्यादा मजा किस में आया टिल डेट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मजा मेरे को अभी ज्यादा आ रहा है, क्योंकि बिफोर जब टीएसएम में, मतलब यस दे वर अ वेरी वेरी गुड टीम, दे स्टिल आर, दे वन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल इवेंट, बट वहां पे ये होता था कि वंस our low phase started, when we weren't winning, we didn't know what to do. Like
कुछ और क्या करूँ, ऑप्शन नहीं था, मतलब और कर क्या सकते. बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा. यहाँ पे it kind of feels like even if we lose, we are still going to be okay. Like even if we lose in the morning, I can come stream at night and still have 20,000 people watching me. I can interact with them. So I don't know what is more fun, but this feels, Soul feels like more of a future, career perspective, where I don't have to worry till I'm 40, 50 years old, and I can just focus on building not just my team but also myself. So definitely feels better working at Soul than it was at TSM. Okay, so आपने प्लेयर्स का बात किया. मैं और जो मेरा को कास्टर है अभिषेक, हम लोग T3 कस्टम्स बहुत पहले खेल चुके थे. यू आर नॉट दैट गुड. सो हम लोग तो ठीक है, हम फ्रेंड्स है, एक क्लैन बना लिया. पर एक जो ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन रहता है जैसे कि सोल या फिर कोई भी XYZ, वो प्लेयर्स का स्काउट कैसे करते हैं और प्लेयर को रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या रहता है वो लोग का? So I'll be very honest. ये जो बड़े-बड़े organizations है, they will not normally look at T3 customs, right? They are not going to look at it because there's just so many T3 customs happening. Even T2 customs, for example, the chances of you being noticed in a T2 customs are very low. But when you take players like Zgod, for example, or even Jonathan, they have climbed from T3 to T2 to somehow to T1. They started performing a little bit there. So it all boils down to performance. How many hours you put in, how much grind you have to keep on moving up the ladder, and you also have to be very realistic. For example, you have been playing T3 for 1 year, let's say, for example, but you aren't going anywhere. You have to be realistic, and you have to sit down one day and say, maybe I'm just not good enough. Let's do something else. Let's change my practice regime. Let's maybe start looking at the IGL role, or let's maybe start looking at the coach role or the analyst role. Because look, I wasn't. I knew 6 years ago that I wasn't good enough to be a professional player, right? I knew I was capped. So it just depends on what kind of practice you put in, nothing else. But this is one of the few industries where there's no nepotism or contact से कोई घुस नहीं पाता है या पैसे दे के घुस नहीं पाता है. If you're talented, if you're a good player, you have to be picked up by somebody or the other. Somebody like me will definitely notice you. Maybe not today, not tomorrow, but one day they will. All right. Since you are a people's guy, like multiple people you have managed, right? From Anuj sir to Tejas to each and everyone from entity to here. So, what have been the biggest hurdles you think a esports player can face while throughout his journey? The biggest hurdle is, as I said earlier as well, the mental strength. Like a esports player will usually go through two things in his career: the highest of highs and the lowest of lows. So that I think is very important to be able to manage, because when you're like 17, 18 years old, okay, I matured, I guess, at a very early age, but 17, 18-year-olds usually don't know how to deal with the world, right? They've just come out of their houses, they've just started college, and suddenly now they have this huge responsibility on their shoulders where 100,000 people are watching them when they play, 100,000 people are shitting on them when they lose. So they have to be able to manage not just when they win, when they're on the top, they have to be grounded, but also when they are very low, when they're not winning. uh it's a very simple balance. So like, confidence for me is not going into an event knowing I'm going to win that event. Confidence for me is knowing I'm going to be okay even if I don't win that event. So that I think has to be one of the biggest qualities for a player. All right. Okay, so let's come to the game. So गेम में आप जानते हो अभी जस्ट एक अपडेट आया. वैसे ही हर बार अपडेट्स आते रहते हैं, और लास्ट जो अपडेट आया था उसमें एक मेटा लोगों ने पकड़ा था कि जो टेस्ला गाड़ी है या फिर मैक्लेरन, उसका साउंड इतना अच्छे से दूर से नहीं आता, जब भी नजदीक आती है तभी एकदम अच्छे से आवाज आते. तो ये एक मेटा कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स को बहुत हेल्प किया है. तो ऐसा कोई मेटा आप कोप अप कैसे करते हो? मैंने जितना देखा है, आप इतना गेम तो खेलते नहीं हो. आई गेस वो प्लेयर्स ही रहेंगे जो आपको बताते रहेंगे, पर आप जो आपका रहते कोप अप करना, वो आप करते कैसे हो? मतलब कोप अप करने जैसा कुछ नहीं है. सी इट इज अ वेरी फंडामेंटल रूल ऑफ एनी गेम यू प्ले दैट द मेटा विल कीप ऑन चेंजिंग. So for the audience who doesn't know what meta is, meta basically means the most effective tactic available. That's what it stands for.
So every 2 months, 3 months, it is going to change because the game developers will want it to change to not make the game stagnant. Because at one point as a viewer, you're going to be bored कि यार ये लोग एक ही गन चला रहे, ये लोग एक ही गाड़ी चला रहे, या लीग वैलो अगर पकड़ लो, ये लोग एक ही एजेंट खेल रहे. So it is a very fundamental rule that the players have to realize कि ये होने ही वाला है, which is why you also sometimes see कि, for example, अगर कोई jet player है वैलो में and jet suddenly gets nerfed, that guy is basically useless for on other agents. So one trick pony, being one trick pony or being just accustomed to one method of playing is something you shouldn't do if you're starting out esports, which is why I said, if you're not succeeding in one role, keep on trying a lot of different things, keep on trying maybe shot calling or something like that, so that you're always used to change, you're always used to adapting yourself to the environment that is around you. So how do you cope up? There's no other option, you have to cope up, because if you don't, you're going to be left behind. Correct. For sure. Okay. So interesting question because it was taken from a survey. All right. So what does it take to set up a boot camp, and what is the approximate cost of setting it up? Oh, I mean, it depends on the scale at which you're setting up. The scale at which SADL has set up, I don't know the exact cost, but I'm pretty sure it must have cost something more than $1 million. Not $1 million, $1 million for sure, because this place is huge. But if you're looking at a 1-2 BHK apartment, is just you have to be smart with the area you're choosing. Obviously, if you choose somewhere in the middle of Bombay, you're going to be paying twice, thrice much, which is why boot camps are usually in Navi Mumbai and Bangalore, where it's much cheaper. So I can't give you exact cost, but you can look around at least, including PCs and everything. A basic decent tier 1 bootcamp will cost you around 30 to 40 lakhs. That's like the basic setup cost for sure. Okay. And how often are the upgrades made into the PC? Not very often. So once, so if for example we have 3090s here, we don't need to get a graphic card for the next 3 to 4 years. Correct. So that doesn't usually happen unless your owner is very rich and you won an event and he wants to gift you something. But apart from that, like even an entity, we've used the same graphic cards for 3 years. So that doesn't happen a lot. All right. So is it sometimes that the players demand some upgrades and the owners can give it to them, or it is like you perform and then we'll give it to you, or is it just a necessity for players? I mean, as I said, it's not always a necessity. So, for example, if I have a 3080 right now, if my player is demanding a 3090, I'm not going to give it to him because it's going to give him maybe like a 20 FPS advantage, but I have to spend 1 lakh on every graphic card that I get him. But at the same time, for example, 2 3 years ago, we used to have 144 hertz monitors, and because that was the industry standard back then. But now the industry standard is 240 hertz. So every 144 hertz we had back then, we had, even before the players told us, we replaced them with 240 hertz, because then it becomes, if you are playing against me with a 240 and I have a 144, you have like an unfair advantage over me. So we Correct. don't want that to happen for the players. But you have a 3080, you have a 3070, you're getting 400 FPS anyway. Like you don't need upgrades unless you're some big streamer who's getting millions of viewers and you want to stream AAA titles. But usually those big upgrades don't happen in 2 3 years. All right. Sachin. Yes. So I don't know whether you have seen yesterday's post or not, but somewhere I have seen that the South Korean government has allowed, has supplied textbooks regarding esports to the children at the school. So, uh, what are your views on that? I mean, South Korea has always been one of the front runners in esports. They have always been ahead, one step ahead of everybody else in esports. Like USA, South Korea, Europe, these three regions have just accepted esports as not a different type of sports, but a different category in itself. So I'm not very surprised. Like I do see some kind of change happening in India maybe in the next 10 years, because once our parents' generation is replaced by us in the next 10 20 years, we know what esports is, and we are going to teach our children or the younger generation what esports is. So I think it'll change in the next 10 20 years in India. But Korea, I'm not even surprised. I've been there once. There's like a cafe every 1 kilometers. Every 1 kilometer, there's a gaming cafe filled with like 40 50 people constantly playing.
So I'm not even surprised that they have started textbooks and stuff in South Korea. So regarding out of the box question, in India, what would you like? Some textbook like thing or like virtual? So you can teach me virtually, not via textbook. What do you think? What will the best for India? I've never been a fan of textbooks. So I've never been a fan of Neither we are fan of that. textbook. I can Yes, we can understand. understand. So I mean, you spent 2 years now studying virtually anyway. So I think most of the students have found it to be like a better way of learning rather than going to college every day and opening your books. So I guess virtually definitely is something I would prefer in the future if that does happen. It's just ease of access, and I mean, I get to sit on a computer and learn about what I love. So it's just it sounds fun. All right. So now, since kind of all you are a global icon, all right, managing TSM entity and like of course PMIS 2020, you guys have won it, and great. But that comes at a price that you are now famous worldwide. So fans कभी आपको मिलते रहेंगे फोटोज के लिए या फिर आपके मे बी योर प्राइवेसी माइट गेट वायलेटेड. तो ऐसा कोई इंस्टेंस या फिर फनी इंस्टेंस की ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ पब्लिक में या फिर वेर यू हैव मैनेज्ड इट आउट की जस्ट वो सिचुएशन से कैसे आप बाहर निकले हो, बिकॉज इट गेट समटाइम्स इरिटेटिंग कि हर जगह आपको फैंस मिल रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि फोटो हर वक्त क्यों, तो वैसा. I'm going to be honest, I kind of love the attention. मुझे पसंद है, मैं बाहर जाता हूँ तब लोग आते हैं, बात करते हैं, फोटो निकालते हैं. मतलब अभी कोविड है इसके लिए मैं ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाता लोगों के साथ, बट अगर कोविड नहीं होता तो मैं हर वीकेंड एक मीटअप कर रहा होता. मतलब आई डोंट हैव एन इंसिडेंट वेयर आई हैव बीन अनकंफर्टेबल या कोई आया है मेरे साथ. ऐसा नहीं कि मेरे को शो ऑफ करना पसंद है, बट आई जस्ट लव द टॉकिंग इंटरेक्शन. टू किड्स, बिकॉज आई डोंट थिंक कोई 25 साल 26 साल का लड़का के मेरा फैन है. जो फैंस है वो 16 15 16 18 साल के हैं. तो it feels good कि I know these people are going to be the players of tomorrow. So I kind of love interacting with them, guiding them, just giving them 2 3 minutes of guidance, and it वो लोग का दिन बन जाता है, so it's the least I can do, because end of the day, like I am because they are, so I owe it to them. All right, and Not what only are the 17, 18 ages, we are also your fans. Don't yeah worry. We 20 are also 21, 22-year-old people. We are also your fans. 7-8 हजार इंजीनियर भरे पड़े हैं चैट में भी बोले. ओके, सो व्हाट आर द मतलब मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस दे आस्क यू अपार्ट फ्रॉम सेइंग कि बिग फैन. अपार्ट फ्रॉम सेइंग बिग फैन, मावी किधर है, स्काउट किधर है, मैं T1 में कैसे आऊँ, मेरे पास डिवाइस नहीं है, मेरे पास नेट नहीं है, आर द मोस्ट यूजुअल क्वेश्चंस आई गेट ऑल द टाइम. डिवाइस वाला तो बहुत कॉमन रहेगा आपके लिए हर एक के लिए कॉमन रहेगा, हर एक ई-स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो डिवाइस वाला बहुत कॉमन है. आई मीन yes, it gives you a little bit of advantage if you have a good device, but I just feel like it's an excuse. I've seen players. Zgod has come from the shittiest device you can imagine. If he's playing in the best team of India now, making probably the most money, but he started off with the shittiest device. I mean, you wouldn't use that device for daily use also. That's the kind of device he started playing on. So device is just an excuse. Get better and you'll make it. Okay, so my next question is mine. So आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ. फेल सबको होना है एक ना एक बार. मैं भी बहुत बार फेल हुआ हूँ. But what is your thought process while you think that you are failed right now, but आप उससे खड़े कैसे होते हो? Any past experience or that? Because my thought process is very simple. I don't think about the results. I think about the process that takes me to the result. So for example, I think about the efforts. If अगर मेरे को पता है कि मैंने 100% एफर्ट डाला है और उसके बाद मैं फिर भी हार रहा हूँ, तो it's not my fault, क्योंकि मैंने 100% एफर्ट डाल चुका हूँ. तो उसके बाद बीटिंग माई सेल्फ अप डजंट मेक सेंस फॉर मी, क्योंकि इफ आई नो इनसाइड कि मैं जितना कर सकता था उतना मैंने किया है, एंड इवन देन आई एम लूजिंग, then there was somebody who was just better than me. I wasn't good enough, but because I have put in my 100%. Next time I'll put in again my 100%. So it just gives me like a very different perspective of things, जहाँ पे I will be sad, I will be low if मेरे को पता है इवेंट में जाते टाइम मेरे एफर्ट्स 100% नहीं है. तब मेरे को बुरा लगता है वो इवेंट हारने के बाद कि यार मैं कर सकता था प्रिपेयर, बट मैंने नहीं किया.
but once मैं टीम को भी वही बोलता हूँ, if you practice the way we are supposed to practice, अगर आप अपना 100% दे रहे हो, then results won't matter. If you're giving your 100% every single day, results कभी ना कभी तो आने ही हैं. It's just not possible कि आप हमेशा अपना 100% दे रहे हो consistently but results नहीं आ रहे, वो तो आने ही हैं. So that's the kind of perspective I have on things. All right. Matured perspective, yes. Okay. So who is the most active or notorious guy in the entire SATUL house? Regaltos. All right. And why so? He's very young. He's famous. He's been getting a lot of attention for the last 2-3 years. Scout is very mature. I mean, yes, he doesn't look like that on streams sometimes, but he's very mature. Mavi is also very fun to be around. He's huge and he looks very old, but he's just 20 years old. He's actually younger than you guys. But he's also very fun to be around. But Rega is definitely like the naughtiest one. He's always up to something. Like he's constantly doing something. He's constantly getting shit from me or Tagbai or Goldie. So he's constantly up for something. Yeah. Okay. So And apart from the competitive players, whom you like to hang out with more, except for Thug and Goldie, other content creators, I mean, you like to hang out the more? I usually hang out with Simar and Excali because they've been my lifelong friends ever since I've started. And like I don't know, I just feel like it's destiny that or fate that we are supposed to be together, because even now our boot camp is here, and randomly I don't know how it happened, but when their new company chose a boot camp, they did not know where the Soul boot camp was, but it's literally not even a 2-minute walk away from where I am. So I can just literally walk over and I can meet my best friends who I've known for the last 6-7 years, who I consider family. So I guess it's like destiny or fate, I don't know. So apart from everybody else at the SATL house, Simar Excali definitely will always be somebody I love hanging out with. Also Anuj, also Amatarasu from VLT. all right. So from VLT, okay. So does SATUL has any plan of bringing up a new Valorant lineup, because it was released a few months back? We are looking at options. Thakbai is definitely looking at options, but we don't want to be emotional. We don't want to be it to be a contest where we are just having a Valo squad for the heck of it. If we are to get into Valorant, we want to make sure that we have a squad that can win not just India, but also maybe put some damage when they go out after winning. And right now, it does seem like there aren't many players available. Most of the players are taken, and there's not a lot of young talent coming out in India right now. But once that happens, definitely we will look at getting into like we don't have any personal grudge against Valor or something or PC sport, but we just need to make sure that if we are investing X amount of money in the scene, that we need to at least make something back. Some Right. profit must come out. Correct. All right. Sajid, you have anything else to ask? Yes, I would like to talk little things about the team Soul that you are currently managing. We all can see that players are currently performing under power, right? And हम लोग को एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा अच्छे से और आए, बट चिकन ज्यादा नहीं आ रहे थे. आप भी देख रहे होंगे लाइव स्ट्रीम्स में बहुत सारे टूर्नामेंट्स में. तो आपका क्या व्यू रहेगा? अभी जो रिसेंट चिकन डिनर आया वो तो मैं 8-bit मर्सी को देना चाहूंगा, उसकी रोटेशन की वजह से आया. बट what do you expect more from the team right now? You started off by saying I was expecting कि ये players perform करेंगे. I knew ये players perform नहीं करने वाले when I joined them, because I know it's a process. I've seen so many teams. I've seen so many versions of teams. I knew कि ये लोग perform नहीं करने वाले हैं, because it's a very split situation right now where 3 players and 2 players have different mindsets with how they want to play the game, and to bring them on the same mindset, it takes time. It's not a one day job. It's 1 week, 2 week में नहीं होता. It takes a long time, because when as a person you're used to playing in a certain way, and you've played that way for the last 2-3 years, just changing like that overnight is not possible. So I knew कि Sky Sport में हम लोग का performance नहीं आने वाला है. It was very obvious. But I know कि 2-3 months down the line, when either these two change or these 3 change, and when they become together, I know performance आने वाला है, because players कितने भी OP रहने दो, when you're playing in a team, you have to play as a team. One guy cannot carry any single team.
So I definitely knew कि time तो लगेगा और अभी भी मैं बता रहा हूँ time लगेगा. Once they are on the same page, I think we have an incredible team on our hands. For sure. So somewhere you think that synergy is missing between the players right now. It's not the synergy that is missing, it's just the mindset. It's the way you want to play the game. Like one guy wants to drive fast, other guy wants to drive slow. Once they both decide how they want to drive the car, I think our car will go smooth. So that's the thing, nothing else. All right. So any other games that SATL is right now focusing on to just get a team and start performing in competitives? Not right now. Valo maybe Free Fire. I think they already have a roster. I'm not sure if it's a sole roster or if it's a 8-bit roster. I'm not managing that. But apart from these games, there's no other esports game that's as a business point of view. There's no other game that it's worth getting into. So I don't think there will be any other games. Wild Rift maybe if it does blow up after releasing in India. Let's see. But right now, just these 3 games. Okay. So are you planning to manage the Valorant roster as well, or you are just Uh, going to de- stick to the PUBG? Definitely, I will take over the Valorant roster as well because PC games has always been my comfort zone. So that is something I can that is somewhere I can also put in my inputs about the games also. So yes, definitely looking forward to it. Also, okay. So this will be my last question since you have been with Excali and Simmers for a long time. So based from the game that you have connected, CS:GO. So what do you think about it right now? Is it a It's dead game or is just going as it is? See, internationally, I don't know. Internationally, I'm not going to comment, but in India, it's definitely a dead game. It's in SEA, for example, it's 100% a dead game. Like if you're a hobby player, if you like watching the game, please do so. It's your personal preference. But if you're looking at esports, please just play Valorant because there's no good CS:GO teams left in SEA. It went from 20 teams at one point of time where not even now one team is registering. Most CSGO pros have already switched to Valo and they have been playing the highest level of Valo as well now. And you see a difference in the kind of fan following also that they're getting on Twitter and other social media. So definitely in India, in SEA, it's for sure a dead game. If you want to play it as a hobby, if you like the game, play it. Otherwise, esports switch to Valo. Because earlier this year we also saw that certain organizations are taking or withdrawing their boot camps from NA. So EU is the only region left, I suppose, for CS:GO right now. And do you think that rolling out of Valorant was a major part of CS:GO being dead? Absolutely. I mean, so personally, when I used to play CS:GO, I'm not very good with my aim. So I used to feel completely and absolutely useless when I played CS:GO. I did not enjoy the game at all. But when you play Valo, there are so many different ways that you can be useful, which is why I started enjoying the game. There are so many things about CS:GO that Valo basically fixed or modified in their game, which made the user very comfortable with their game, right? And Riot has always done that, even with League of Legends when it came out 10, 20 years ago. They fixed the things that people did not enjoy about Dota 2. They did the same thing with CS:GO and Valorant. So obviously, when you give a game to a people which has fixed like 10, 20 things they have constantly complained about for the last few years, they are obviously going to switch. And Valve, I don't think cares a lot about CS:GO or even Dota 2 because even though we think like these two are like the biggest games in the world, one of the biggest games, it's probably not even 5% for Valve, because Steam and how many games are on that platform. So it's not a big deal, which is why I've never seen them listening to the community as much as Riot Games does. Riot Games does, yes. So definitely that was a reason for CS:GO dying. So I think people cursing on Gaben has not gone to waste after all the game is dead right now. Okay, so thank you so much, Sid, for joining. Also, guys watching right now, it's Sid's birthday today. So please let's wish him a very happy birthday on the chat. And yes, thank you so much, Sid, for joining. All the best for today. Enjoy yourself, and thank you for joining. Congrats, Sid, and thank you so much for Thanks for having me. Thank you. Have a nice day. Our Bye pleasure. bye. Thank you so and much. happy Bye birthday bye. to you. Yes.
चालू करो
अरे स्ट्रीम स्ट्रीम हम्म। खाना वाना खा लिया तू? खा लिया? स्ट्रीम चालू है? Welcome ladies and gentlemen to Rocket League. This is the finals na? This is the semi-finals and we have two teams playing right now and Octane देखने को मिल रहा है हमको यहाँ पे फिलहाल. Octane से मारा जा रहा है and बहुत ही प्यारा गेम फिलहाल चलता हुआ है. We are 30 seconds into the game and rotation बहुत ही फास्ट कट होता हुआ है यहाँ पे. So we have not a doctor, Sharma, शानू एंड डार्क नेमेसिस एंड यस कूद के गेम खेला जा रहा है एंड ओके पेनेक यहाँ पे यूज किया जा रहा है. सो वी हैव प्रो पेनेक प्लेयर्स मीनवाइल एंड बूम कर दिया गया है. नाइस, वेरी नाइस. ऑलराइट, सो मैंने ये मिस कर दिया था. स्टार्ट हुआ था गोल का एंड हियर इज सेकंड गोल. तो 2-0 के साथ चलता हुआ फिलहाल मैकेनिकल है ना, मैकेनिकल वर्सेस आईटी. दूसरा किसमें? वेट, आईटी वर्सेस एक टीम है इतना मेरे को मालूम है. कहाँ गया रैपिड लीग? आईटी है. ऑलराइट, सो यस दिस इज आईटी वर्सेस मैक. पकड़ रहा हूँ मैं या तो कॉम जो भी है बट ओके. ऑलराइट, व्हाट इज द शॉट? बहुत ही प्यारा डिफेंस. लेट्स हैव अ पीओवी ऑफ एनी वन ऑफ द प्लेयर्स. कैन वी होस्ट? यस, थैंक यू सो मच. यहाँ पे ऑल राइट, मोशन ब्लर के साथ पहली बार देख रहा हूँ मैं गेम, तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है बट ठीक है. ओके, बढ़िया से ड्रिबल किया है एंड आई थिंक ये भी गोल जाने वाला है. पास दे दिया गया है, पास के बाद स्टॉप एंड ये लगता हुआ वेरी बैड. बट यहाँ पे पेनिक भी अभी फुल पावर के साथ मारेंगे लेकिन सेव हो जाएगा. एपिक सेव के साथ नहीं, नॉर्मल सेव के साथ. बट डार्क नेमेसिस भी एंड ए परफेक्ट रोलिंग शॉट बट नहीं. एरियल का ट्राई किया जा रहा है हर टीम से लेकिन नहीं हो पा रहा है एंड ज़मीन पे खेलने का कोशिश कर रहा है. कैन वी प्लीज टर्न ऑफ द कैमरा शेक फ्रॉम द सेटिंग्स? कैमरा शेक सेटिंग में है वीडियो में. कैमरा शेक राइट में सब अनटिक कर दे, खाली ब्लूम टिक रख. yes, so now I think it would be good and let's spectate not a doctor. और आई थिंक नॉट अ डॉक्टर को ही देख रहे हम एंड यहाँ पे बढ़िया सा कर दिया गया है नॉट अ डॉक्टर से. बॉल पीछे की तरफ जा रही है लेकिन फिर भी रिबाउंड किया गया डार्क नेमेसिस की वजह से एंड वापस से आगे भेजा गया गोल की तरफ नॉट अ डॉक्टर के पास से. एंड एक प्यारा सा कट मार सकते थे पहले लेकिन नहीं, गोल का मौका मिस हो गया लेकिन अभी भी मिस हुआ नहीं है. उड़ा दिया गया नॉट अ डॉक्टर को एंड अभी बॉल आएगी शर्मा. राज क्या लगता है? 2-0, 1 मिनट 20 सेकंड बाकी. जी बिल्कुल, लेकिन टालना भी ज़्यादा सफल नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे शानू जो हैं यहाँ पे बहुत ही प्यारा मारने का ट्राई कर रहे थे. जॉर्ड गोल, जॉर्ड गोल, जॉर्ड यस, जॉर्ड गोल. ओके, तो ये सेमीफाइनल्स नहीं है, फाइनल्स चल रहा है एज इन्फॉर्म्ड इन द चैट. ठीक है, 1 मिनट रिमेनिंग आ गया है एंड यहाँ पे बहुत ही प्यारा बूम किया गया है, बूम बूम. ऑलराइट, 50 सेकेंड्स लेफ्ट, 3-0. आई डोंट थिंक कुछ ऐसा होने वाला है बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. अगर एक और गोल जाके किक ऑफ गोल मार सकते 4 देन आई थिंक इट विल बी बेस्ट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. बट ठीक है, वापस से बूम करेंगे एंड
मेरे मुंह में घी शक्कर गाइस, मैंने बोला था एक और गोल गया तो फिर हम 1 मिनट गोल का भी खेलेंगे। 4-0 चलता हुआ, हम 7-0 आ रहे थे, ये 4-0 चल रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट ये फाइनल से सो इट्स ओके, बट स्टिल यहाँ पे अभी मैच चालू होगा। लेट्स स्पेक्टेट शानू इफ पॉसिबल। शानू को स्पेक्टेट करेंगे प्लीज एडमिन। यस सर, शानू को हम स्पेक्टेट करेंगे अपनी प्यारी सी पेनेक के साथ। एंड यहाँ पे स्क्रीन अटकता हुआ, पैकेट लॉस आता हुआ हमारे एडमिन की तरफ से, बॉल कहीं और गया, कैमरा कहीं और, शानू बॉल मारे बट रिबाउंड करके वापस पीछे आ गए। अब 40 सेकंड से अभी कितना 2 ही सेकंड बाकी है एंड फर्स्ट मैप आता हुआ ब्लू टीम के पास। कुछ बेस्ट ऑफ 3 का सेकंड मैप आता हुआ। नाउ विल बी वाचिंग हु विल विन। 48 का पिंग आ रहा है, 12 का पिंग आ रहा है। मुंबई इंडियन सर्वर्स आ गए हैं फ्रेंड्स इन रॉकेट लीग। अभी किक ऑफ आता हुआ एंड यहाँ पे प्यारा सा किक ऑफ होते हुए नॉटो डॉक्टर से एंड आई गेस ऑल राइट, हवे में एक शॉट मारेंगे बट डिफेंस के लिए टाइम पे आते हुए शानू, बहुत ही ज़्यादा टाइम पे आए हैं शानू एंड इससे ज़्यादा अच्छी टाइमिंग नहीं हो सकती थी बिकॉज नॉटो डॉक्टर ने भी शॉट मारने के बाद छोड़ दिया था बॉल को, कंफर्म करने नहीं गए, वही उनकी गलती, बट नहीं हुआ एंड कंफर्म भी प्रॉपर नहीं हुआ, एंगल गलत हो गए एंड यहाँ पे अभी बॉल जाता हुआ ब्लू टीम के गोल की तरफ, दौड़ा के मारेंगे बट शानू से फिर बॉल छूट गई एंड वो पीछे जा रहे हैं ऑरेंज टीम के गोल की तरफ एंड यहाँ पे बॉल पे किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ पे नॉटो डॉक्टर आ रहे थे गोल लेने के लिए बट शायद से नहीं ले पाएंगे, ब्लॉक हो गया बॉल। क्या लगता है कैसा चल रहा अब तक का गेम राज बोलने का? जी बिल्कुल, नॉटो डॉक्टर को अभी देखेंगे बट नहीं। व्हाट अ ग्रेट सेव, व्हाट अ ग्रेट सेव भाई शानू। यही फायदा होता है पेनिक लेने का, एक छोटी सी कॉम्पैक्ट बॉडी, हाइब्रिड इज नॉट मच बेटर इन हाइट, फ्लैट टाइप है बट ठीक है, जितना आता है रॉकेट लीग के टर्म सब बोल रहा हूँ मैं अभी। एंड एरियल करने का ट्राई हुआ लेकिन एरियल अनसक्सेसफुल होता हुआ एंड यहाँ पे अभी एक बहुत ही टाइट सिचुएशन चल रहा है। 3:30 हो गया है एंड टाइम की बात, यस 3 मिनट 34 सेकेंड्स हो गए हैं। मैं टाइम नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअल टाइम बोल रहा हूँ। इस बार मिस करना नहीं चाहते नॉटो डॉक्टर, एक गोल करके अपना कम से कम उस चीज़ को सिक्योर करना चाहते। क्या बोलते रहे? एंड चैट पे बताया जाएगा कि कौन सा चीज़ आपको आज के दिन में ज़्यादा अच्छा लगा। वैलो की बात नहीं करे तो अच्छा है बट स्टिल ऑडियंस के ऊपर है कि कौन सा गेम आपको अभी और देखना है, क्योंकि BGMI आई डोंट थिंक स्ट्रीम हो सकता है ड्यू टू सम टेक्निकल डिफिकल्टीज। ऑल्सो इट इज़ नॉट एन इवेंट और अ टूर्नामेंट इन केस वी डोंट हैव एनी टेक्निकल डिफिकल्टीज, तो टेक्निकल डिफिकल्टीज तो बनता है बट या फ्लैट टाइप हाइब्रिड, वही मैंने बोला TCT बॉय हिटबॉक्स फ्लैट, ये मेरे को मालूम है 2 टाइप्स के, बट जितने भी रॉकेट लीग के टर्म्स आते हैं सब बोल रहा हूँ अभी, सो डू नॉट जस्ट इन दैट। मीनवाइल शब्द, यस एग्जैक्टली, शब्द खत्म हो गए बट जज्बा अभी भी वैसा ही है। मीनवाइल अभी अगर गेम पे ध्यान दे गला ओके, सो मीनवाइल गेम की अगर हम बात करें अभी तो 2 मिनट 30 सेकेंड बाकी है। वी आर ऑलमोस्ट डाउन टू हाफ टाइम एंड नहीं हुआ, बहुत ही अनफॉर्चुनेट था ये बट ठीक है, कुछ नहीं, होता है, ऐसे चीज़ें होती रही है, सो वी शुड नॉट बी वेरी, यस बड़े बड़े फुटबॉल रॉकेट लीग मैचेस में छोटे छोटे मिस्टेक्स होते रहते हैं, जो भी है। बहुत ही महंगा पड़ेगा ये ओन गोल अभी इनको, क्योंकि अभी दोनों टीम्स ट्राई करेंगी गोल मारने का और डिफेंस करने का। ऑरेंज टीम मेरे ख्याल से जॉर्ज जो है टीम, जॉर्ज
वो लोग ट्राई करेंगे कि यस, सो नहीं, उनके टीम का नाम भी जॉर्ड है, इफ यू कैन सी। यस, जॉर्ड, यस। तो ये लोग अभी ट्राई करेंगे गोल बचाने का, क्योंकि ब्लू टीम ने लास्ट मैच में 4-0 किया था। मीनवाइल बॉल ट्रिपल करवा के ऊपर से लिया गया था एंड गोल जाने की शंका दिख रही है, बट तोड़ दिया जाएगा एंड बॉल पोस्ट पे लग के रिबाउंड होएगा। अभी फुल स्पीड से मारा गया है, शायद से ये गोल जा सकता है एंड दिस इज अ गोल। व्हाट अ लवली गोल, जॉर्ड गोल। बट ये जॉर्ड ने नहीं मारा है, ये VTFC वालों ने मारा है। सो ठीक है, टू मॉक द जॉर्ज वी कैन से जॉर्ज। ऑल्सो गाइस, कमेंट में आ जाना चाहिए कौन से डिपार्टमेंट को आप सपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट 6 डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट का पॉइंटिंग हमारे इंस्टाग्राम पे आज आ गया है, Tsdw-Tcet। सो यू गाइस कैन गो एंड वॉच इट। सो स्टार्ट करेंगे वापस। वी आर डाउन टू 1 minute 23 seconds एंड 1-2-1 का सिचुएशन चलता हुआ। ऑरेंज टीम अभी डेस्परेट हो रही होगी गोल मारने के लिए, बट ब्लू टीम बॉल हाथ में आने नहीं दे रही उनके, बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजंस 2-1 का लीड बना हुआ है एंड बेस्ट ऑफ 3 का मैच है, सो नो वन वांट्स टू प्ले अ थर्ड मैच, डोंट डू दैट। एंड राज बहुत ही प्यारा शॉट था, एरियल निकाला था उन्होंने वॉल से रिबाउंड करके एंड ये भी जा सकता है, बट नहीं। एंड ये पे नहीं, मिड पे गिरा है, मिड पे फॉल हुआ है बॉल, लेकिन नॉटर डॉक्टर बॉल छोड़ने के मूड में नहीं लग रहे, वापस से हवा से निकालने का ट्राई कर रहे थे, बट बहुत ही खराब रिबाउंड एंड असफल होता हुआ। एंड बॉल जाने से दिख रहा है, लेकिन दोनों टीम थोड़े से बचा है। 2-2 होता हुआ, 27 सेकंड लेफ्ट एंड 2-2 होता हुआ। बहुत ही ज्यादा मौके पे चौका मारा है एंड जी, वरना वी आर जस्ट डाउन टू ओवर टाइम इन दैट केस। जी, एंड चालू होता हुआ जी, ब्लू गोल की तरफ जाता हुआ था, लेकिन 2-2 पे अभी 10 सेकंड बाकी है। कोई भी टीम एक गोल मार दी उनके लग जाएंगे, बट स्टिल यहाँ पे गोल जाने की आशंका नहीं दिख रही मेरे को। ये बॉल हवा में रखने का ट्राई करते, बट ओवर टाइम जाता हुआ यहाँ पे 3-1 आता हुआ ओवर टाइम का एंड यहाँ पे बॉल पिक अप होएगा एंड यस, सो बेसिकली ओवर टाइम जिनको नहीं मालूम, चलो यार ठीक है, हाँ, बट नेवरदलेस ओन गोल जाता हुआ बॉल डिफेंड करने के चक्कर में एंड यहाँ पे रिबाउंड हो गया बॉडी से शानू के एंड बॉल चला गया गोल के अंदर एंड यहाँ पे जीतते हुए नॉटर डॉक्टर की टीम, पूरा नेपोटिज्म हुआ है। जो ऑर्गेनाइजर है उन्हीं का टीम जीत रहा है, तो आप समझ जाइए पूरा नेपोटिज्म है। मेरे को तो लग रहा है 500 रुपए में मान गए रहेंगे, बट ठीक है, पता नहीं मेरे को, क्योंकि विनिंग प्राइस भी उतना ही था। जैसा भी है, आई डू नॉट सपोर्ट नेपोटिज्म एंड आई एम टेलिंग दिस इज नेपोटिज्म। जिसका इवेंट है वही जीते, दिस इज नॉट डन, बट ठीक है, वी एंजॉयड दिस गेम। वी थैंक यू गाइज फॉर ट्यूनिंग इन राइट नाउ। वी आर डन विथ Rocket League right now, and I guess we'll be starting with anti-chess pretty soon. Thank you so much for joining. We'll be back soon.
बैक गाइस, वी आर बैक विथ रॉकेट लीग। थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, मुंह से निकल गया था। थोड़ा डॉक्टर जरा बकचोदी करने के मूड में। गाली मत दे रहे, TSDW का चैनल है। कौन सा Suspend मिश्रा देखने वाला है? ये भाई बट जो भी है, यस वी आर वेरी, ही इज टॉकिंग अबाउट अभिषेक मिश्रा, ओके, मेरी बात कर रहा हूँ। सो विल बी स्टार्टिंग ऑफ दिस फाइनल्स है ना ये वाला? हाँ पक्का वाला फाइनल्स, पक्का वाला फाइनल चाहिए इस बार। एंड मैच चालू होता हुआ 40 सेकंड हो गया था एंड हमको पता नहीं था, तो सॉरी डॉक्टर थोड़ा इस बार पीछे होते हुए थोड़ा जरा हल्के हो गए हैं। हाँ एग्जैक्टली, मैंने खाना नहीं खाया, सुबह से वालों के मैचेस हार रहा हूँ तो थोड़ा सा दिमाग खराब। थोड़ा सा जरा एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। यस, मीनवाइल नॉटा डॉक्टर को बहुत ज्यादा फुटेज दे दिया लास्ट सेमीफाइनल में। अभी दूसरे प्लेयर्स को स्पेक्टेट करेंगे। बिली अभी खेलते हुए मैन इन ब्लैक एंड उनके साथ है शौर्य 60। क्या बोल रहे? ये गोल हो सकता था बट नहीं हुआ। जी बिल्कुल, बहुत ही प्यारा सा गोल जा सकता था, लेकिन ऑफ कोर्स टप्पे में नहीं गया। जी, तो टप्पा कहाँ गिरता है और पप्पा कब आते हैं वो प्रॉपर एस्टिमेट हो गया। यस, तो फिर आप जिंदगी में सफल है। और यहाँ पे वापस टप्पा गिरता हुआ एंड यहाँ पे शौर्य बॉल मिस कर जाएंगे बहुत ही प्यारी तरीके से, गंदी तरीके से तो बोल नहीं सकता, प्यारी तरीके से मिस करेंगे। एंड यहाँ पे बहुत ही प्यारा डिफेंस लगाते हुए बॉल जाता हुआ वापस शर्मा का डिफेंस किया है और ये गोल थोड़े के लिए रह गया है, थोड़े के लिए गोल बचता हुआ, बट ठीक है। वी आर हाफ वे डाउन, यस वी आर हाफ वे डाउन द मैच एंड यहाँ पे 0-0 चलता हुआ स्कोर, बहुत ही प्यारा स्कोर दिखता हुआ, लेकिन एज यू नो लास्ट टाइम भी ऐसा ही कुछ हुआ था राज। इस बार दोनों टीम गिव करने की तैयार नहीं है, दोनों टीम लेकिन ट्राई हार्ड दे रही है। जी बिल्कुल, एकदम ट्राई हार्ड में ट्राई करके मिलता गया बट फिर भी ठीक है। बट नेवरदलेस यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए ये लोग अपने गेम्स को एंड यस, ये लग रहा है कि अपना शौर्य का गोल हो सकता है और ऑन गोल छुपाना पड़ेगा अभी थोड़ी देर के लिए। शौर्य को पहुंचने का भी जरूरत नहीं पड़ा उनके गोल तक, क्योंकि ये गोल सीधा उन गोल तक गया है एंड गोल छोड़ दिए होते तो भी छूट जाता, मतलब गोल जाता नहीं, टच करने का जरूरत नहीं था, पर ठीक है। डॉक्टर अपने गलती को सुधारने की ट्राई करते हुए बट फिर भी गोल वापस जा रहा है एंड चैट पे चल रहा है कि सेमीफाइनल्स 2 किधर है, तो मेरे को लग रहा है कि ये सेमीफाइनल्स 2 है एंड हमने फिर से फाइनल्स फिर से ही हमने नहीं, एक्चुअली अभिषेक मिश्रा नहीं, थोड़ा फिर से ही फाइनल बोल दिया है। अब देखते हैं, अब मालूम थोड़ी देर मालूम पड़ ही जाएगा ना। तो ठीक है, हम हर गेम को फाइनल सोच के खेलते तो फिर अच्छा लगता कि सरप्राइज मिलता है। यस यस, देखो गाइस 1000 रुपए इसलिए भरो, TSDW gives you a lot of surprise. Yes. So हमने पिछले से में भरी नहीं थी, बट इससे भरना ही पड़ेगा भाई। ये सब दूसरा घर पे रेड पड़ते हुए TCT का, बट ठीक है। यहाँ पे चालू करेंगे अपना, बाकी 50 सेकेंड्स बाकी है एंड यहाँ पे 0-1 होता हुआ स्कोर्स। ब्लू टीम अभी बहुत ही ज्यादा डेस्परेट दिख रही है गोल मारने के चक्कर में, अपना बॉल छोड़ने को तैयार नहीं, वो गेम को टालने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, अपने बॉल को कौन छोड़ेगा जब आपके पास एक गोल का लीड है पहले से ही, तो फिर और यहाँ पे एक ही चीज हो सकता है अभी, स्पेक्टेकुलर मारने का ट्राई। नॉट अ डॉक्टर अपने आप को साबित करते हुए कि हम यहाँ के राजा। यस, एक जो ओन गोल गया था, एक बहुत ही प्यारा टच हुआ है नॉट अ डॉक्टर से एंड गोल चला गया। यहाँ पे किक ऑफ होता हुआ बॉल जाएगा ऑरेंज टीम के गोल की तरफ एंड देखते हैं कि लास्ट 30 सेकंड में किसका गोल जाता है या फिर ओवरटाइम में जाएगा। क्या लगता है लास्ट गोल कौन करेगा? देखो भी वही लग रहा है कि एक ओवरटाइम जाने वाला है लास्ट टाइम जैसे एंड 8 सेकंड में ही गोल होएगा, बट एरियल शॉट्स ट्राई करते हुए नॉट अ डॉक्टर बहुत ही ट्रायहार्ड मोड पे दिखते हुए मेरे को अभी। दोनों साथ साथ में चल रहे हैं एनिमी और अपना टीम, और बिल्कुल अहमद ने गोल बचाया है। इंटरसेप्ट जा सकता है क्या? और ये शायद से गोल है, बट नहीं, 1 सेकंड के लिए मिस हो गया। पोस्ट लग गया था, पोस्ट की वजह से नहीं गया बॉल, वरना बहुत ही प्यारा शॉट था वो एंड आई बजाते हुए। यस, एंड आई गेस आप खड़ी हो गई है
राज, आपने शायद से माइक अनम्यूट किया इस बार, आई गेस। यस, यो ऑल राइट। सो राज का आवाज आता हुआ ये मैच में। तो यहाँ पे यस, तो 11 सेकंड होता हुआ बॉल जाता हुआ दिख रहा है हमको ब्लू टीम के गोल की तरफ। सेंटर में बॉल पास किया था, लेकिन इंटरसेप्ट की वजह से अभी वापस बॉल उड़ के गया है पीछे के साइड पे। और ये शायद से शर्मा का गोल हो सकता था, बट उन्होंने काउंटर अटैक कर लिया है एक्चुअली में। जी बिल्कुल, एंड यहाँ पे साइड से सपोर्ट आता हुआ नॉटा डॉक्टर का, बट यहाँ पे गोल नहीं जाएगा। यहाँ पे रिबाउंड कर दिया गया है। बहुत ही फास्ट गेम चलता हुआ यहाँ पे, फास्ट करते हुए बॉल कॉपी पीछे ढकेला है। जी बिल्कुल, एंड यहाँ पे बॉल के लिए लड़ाई चलती हुई, एंड यहाँ पे बॉल पास ऑन से गोल हो सकता है, बस एक टच, थोड़ा हल्का टच, बट फिर जोर का टच कर दिया। बहुत ही ज्यादा जोर का लग गया, एंड ये गोल जाने वाला था, बट शौर्य ने बॉल सेव करते हुए बहुत ही अपना बखूबी निभाया है अपना रोल। ये टाइम आउट हो ज़्यादा दूर जा रहा है, बट ये शायद से गोल में कन्वर्ट हो सकता है अभी। एंड 1 मिनट 5 सेकंड होता हुआ एक भी गोल नहीं गया अब तक। विल जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच कि क्या हो रहा है। शर्मा डिफेंस में खड़े हुए हैं डिफेंडर, बॉल उनकी तरफ आते हुए डॉक्टर भी आ रहे हैं, और ये बॉल यहाँ पे सेव कर दिया गया है बहुत ही प्यारी तरीके से, एंड उड़ के जा रहा है ऑरेंज टीम के गोल की तरफ। जितना नॉर्मल मैच नहीं हुआ उतने का तो ओवर टाइम चलने वाला है, ये मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे बॉल आता हुआ, बट कोई भी टीम से ऐसे ट्राई हार्ड कोशिश पूरी दिख रही है दोनों टीम्स की तरफ। गोल होते होते रह गया। बहुत ही प्यारा अटेम्प्ट था वो, बट ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। और अभी धूप ही लग जा रही है, छाया तो दिख नहीं रहा है। छाया दिख रहा है हमारे व्यूअर्स के मुंह पे, जिनको ये ओवर टाइम खत्म किया है चाहिए कि और कोई ये ओन गोल रहते, और ये गोल हो गया। दिस गोस टू द ऑरेंज टीम नाउ अगेन। टीम आईटी 2-1 ओवर टाइम 2 मिनट पे गोल होता हुआ, एंड ये राउंड आता हुआ टीम आईटी के। इस बार आईटी आगे पीछे नहीं हटने वाली, वो अपना 100% देने वाली है। एंड मैं जरा कंफर्म करके आया एडमिन से। ओके गाइस, तो मैं कंफर्म करके आया हूँ कि जो ये मैच चल रहा है वो फाइनल्स ही है, एंड जो लास्ट गेम स्ट्रीम हुआ था वो सेमीफाइनल्स 2 था। तो आई गेस अगेन सरप्राइज मिला है आपको। हमें मैच लिव करके फिर से ज्वाइन करना है, सो वेट। एंड चैट पे पता चलना चाहिए कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं, मैक या फिर आईटी। एक डाल दिया जाएगा मैक, पोल डाल दो, ऐसा पोल डाल दो आप। पोल के लिए कर सकते हैं हम पोल, कुछ ऐसा ये नहीं है, बट कौन से टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं ये फटाक से आ जाना चाहिए। मैं आईटी के लिए जाऊंगा। मैं तो आईटी का ही हूँ, तो आगे बढ़े। बैलेंस बनाने के लिए मैं मैक में जाता हूँ। बट आप कंप्यूटर्स के, और कंप्यूटर्स और मैक अरे मैच स्टार्ट हो गया है, बट आई थिंक सो कि 2 लोग ने लेफ्ट कर लिया है, तो इन्हें भी लेफ्ट करना पड़ेगा इधर से मैच से। तो आई थिंक वी विल जॉइन अगेन। और इसमें टेक्निकल डिफिकल्टीज कैसे होते हुए थोड़ा जरा, या फिर जानबूझ से किया जा रहा है, पता नहीं, देखते हैं। अभिषेक जी आप थोड़ा कंफर्म करके आएंगे? जाते हैं। तो प्लेयर्स ज्वाइन कर स्टार्ट करेंगे हम थोड़े टाइम में।
AF क्यों आ रहा हूँ 2 मिनट. इन्होंने फिर से मैच लीव कर दिया है तो फिर से वापस चेंज करना पड़ेगा. इनको थोड़ा मन कर रहा है कुछ बोलूं बट ठीक है स्ट्रीम चल रहा है. One. क्या चल रहा है भाई साहब? Hello. सुनो. हाँ, Reflex one में join करना है सर्वर पे. क्या क्या? Reflex one पे join 1 2 3 पासवर्ड राज वो अरे ज्वाइन तो कर. स्ट्रीम पे मत बोल रहे भाई. क्या हुआ? स्ट्रीम पे जाके वो बोल रहा है उधर. कौन? पासवर्ड और वो लॉबी का. पासवर्ड क्या था लॉबी का? आपका अपन भी बोल दे 1 2 3. एक मिनट में पूछ के आता फिर से. किधर गया? एलआईटी नाटक कर रहा है भाई. Unable to find a server भाई. Reflex one 2. Reflex one है. Reflex one है ना. अच्छा रिफ्लेक्स 1 और पासवर्ड 1 1 2 2 3. पूरा स्ट्रीम को मालूम पड़ गया. चलो गुड हो गया. स्टार्ट कोई स्टार्ट. नहीं.
So we are back, guys, with map 2 or round 2 of the finals of Rocket League by Tsdw-Tcet, Reflex 3.0. This is our caster Abhishek Dr. Mishra along with your co-caster Raj Velnekar. तो राज में भी कुछ गड़बड़ हो गई है क्योंकि मोटर अकेले हैं और बाकी के दो 1v2 हो रहा है 1v2 हो या 2v2, I don't think कि ऐसा फर्क पड़ने वाला है, बट ठीक है. nevertheless शर्मा T01 आ चुके हैं. 30 सेकंड डॉक्टर ने निकाल लिए हैं अपने, एंड अच्छा टाइम पास किया उन्होंने ये टाइम पे. ऑल्सो चैट पे आ रहा है कि क्या हम कास्टिंग कर सकते हैं, क्या हम कास्टिंग कर सकते हैं. सो गाइस एक ऐसा ये होता है कॉन्टेक्स्ट या फिर क्लॉज होता है कि आपको अपने घर गिरवी रखनी पड़ती है अगर आपको पहला गोल. बट बकवास अगर हटाए हम बाजू में तो पहला गोल जाता हुआ फिलहाल, एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शॉट था शौर्य की तरफ से. भले उन्होंने पोटैटो में 10 सेकंड क्या किया फिर भी गोल मिला. जी बिल्कुल. गोल करने वाले के ऊपर लिखा है गोल करना. यस. ऑल्सो बहुत सारे लोग पूछे थे कास्टिंग के लिए तो आपका घर गिरवी रखना पड़ेगा, कास्टिंग के लिए आपको जायदाद गिरवी रखनी पड़ेगी, तब जाके आप कास्टिंग के लिए एलिजिबल. स्पॉन्सरशिप तो करनी ही पड़ेगी जिस गेम में आपके. हाँ, मिनिमम 10-12 हज़ार का स्पॉन्सरशिप लाना पड़ता है. प्राइस पूरा करना है. और ये शर्मत ने फिर से अपना काम कर दिया है वापस लेट आके. बहुत ही प्यारा गोल जाते हुए लेट आए हैं, दुरुस्त आए हैं. मेरे को लग रहा है कुछ ऑन करके आए हैं. yes. क्या बट ऑन हो या ऑफ हो तो बाद में ऑन करके आए हैं जी. तो फर्स्ट राउंड आईटी जीता था, ये सेकंड राउंड चल रहा है एंड बेस्ट ऑफ 3 है ये. एंड यहाँ पे बॉल बाउंस होके जाता हुआ ब्लू टीम के गोल की तरफ, बट आई थिंक डिफेंस स्ट्रॉन्ग है. एंड यहाँ पे बॉल आगे चला जाएगा. कैमरा एंगल चेंज करेंगे हम थोड़ा सा, एंड यहाँ पहुँचेंगे हम ऑरेंज टीम की तरफ. एंड बॉल को हम इस बार स्पेक्टेट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ जा रहा है. शौर्य बॉल कैरी कर रहे हैं एंड ये गोल जाने का मौका है. और ये बिली गोल बैक पकड़ा गया बिली. रिवर्स अगर मार सकते थे तो फिर वो गोल जाता, लेकिन रिवर्स भी उन्होंने मारा नहीं, सिर्फ एक जंप मारा पीछे. एंड और ये गोल मारते रहे. बट यहाँ पे गोल जाएगा बिल्कुल. शर्मा टी के तरफ से दूसरा गोल आता हुआ लेट ज्वाइन करके. मैं बता रहा हूँ राज कुछ ऑन करके आए हैं ये. हाँ. तो ठीक है, 3 मिनट तो 2 मिनट 50 सेकंड बाकी है. एंड अच्छा चला गया, अच्छा सेव बाय ऑरेंज टीम. यस. एंड यहाँ पे 1-1 होता हुआ स्कोर. बहुत ही उम्दा खेल चलता हुआ फिलहाल. 2 मिनट 30 सेकंड आएंगे हम. एंड आया है इस मैच का. एंड आई थिंक आईटी फिलहाल एक गोल के पीछे जाएगी क्योंकि उनकी एक मैच वो पहले से लीड में. बॉल को फॉलो करते हुए बट उन्होंने बैक ऑरेंज टीम ने बैक मार के वापस बॉल वापस धकेल दिया है. डिफेंस खाली, शर्मा वापस से अंदर और ये गोल हो सकता है. नहीं, शर्मा रोक ले. और ये दूसरा गोल बचते हुए आई थिंक डॉक्टर का दूसरा गोल हो सकता था बट उन्होंने ज़्यादा ही बाउंस कर दिया है बॉल को. एंगल थोड़ा अलग बैठ गया नॉटा डॉक्टर का. वो एंगल अगर सही रहता तो फिर बॉल जा सकता था, लेकिन ठीक कर पाते बिल्कुल कर दिया है. बट क्या शौर्य वापस मार पाएंगे गोल? नहीं, नोटा डॉक्टर कब से नोटा डॉक्टर के बाद अच्छा मौका, लेकिन बिली 3-3-3 बॉल को बचाएंगे. बॉल वापस बच जाएगी. एंड इसी तरीके से अभी हम देखेंगे कि कौन सी एक टीम है जो गोल मारेगी, क्योंकि 1 मिनट 30 सेकंड बाकी है. एंड आईटी की टीम एक राउंड पहले से जीत चुके हैं. ये राउंड भी जीत गए तो वो फाइनल्स के जीत यस जीता याद आ गया रे. जीता याद आ गया हमको. मीनवाइल थोड़ी सी अगर हम बात करें तो फिर ये गोल जाता हुआ आईटी की तरफ बहुत ही प्यारा गोल जाता हुआ. 1 मिनट 8 सेकंड रुक रहा है. अभी आईटी अपने कंधों पे खड़ी हो गई है एंड नाच रहे होंगे. यस, नाच रहे होंगे वो लोग बिकॉज 2-1 का स्कोर होता हुआ यहाँ पे. 1 मिनट 8 सेकंड बाकी है. अभी अगर कम बैक करना है और तो ये फिर से गोल हो सकता है क्या? और ये बॉल एक और गोल बस शौर्य.
शौर्य अभी पक्का नशा करके आए हैं क्योंकि 2 गोल बट बैक ये टू बैक। कुछ नहीं होगा, स्किल चाहिए ओवर स्किल्स। जी बिल्कुल, स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फिलहाल मैकेनिकल को, बिकॉज 1-3 हो रहा है, हमने 2 सेकंड में 2 गोल नोटिस किए फिलहाल के लिए। 1 मिनट बचा हुआ लास्ट के। मैकेनिकल को अगर जीतना है तो ओवर टाइम खींचना पड़ेगा, जिसके लिए इनको 50 सेकंड में अभी 2 गोल मारने होंगे। Which is right to next impossible. और शर्मा यहाँ पे प्रूव होते हुए वैलोरेंट में और रॉकेट लीग में भी। ऐसा मत बोलिए, क्योंकि शर्मा जी ही थे जिन्होंने 1 गोल मारा है अपने टीम की तरफ से। यस, बिकॉज अभी 30 सेकंड बाकी है। 2 ऑरेंज टीम डाल रही है बॉल को। जी बिल्कुल, लेकिन ऑरेंज टीम ये भी देख रही है कि हम एक और गोल मार सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा उतना अच्छा। और डॉक्टर ऑफिस बोले थे 1 गोल तो करके दिखाएंगे ये, बट नहीं। बट यहाँ पे फिर भी मिस होता हुआ ये गोल, बहुत ही गंदा मिस होता हुआ। एंड यहाँ पे हम बॉल की तरफ नजर लेंगे। एंड यहाँ पे रोलिंग कर करके लेके जा रहे थे बॉल को, 1 गोल मारने का कोशिश कर सकते हैं, नहीं। इसी के साथ हमारे विजेता है टीम आईटी। आईटी जीतता हुआ, मैंने बोला था आईटी जीतेगा। एंड यस, अब मुझे लगता है कि स्कोर बराबर हो चुका है, तो अभी लास्ट मैप खेला जाएगा शायद से। लास्ट मैप नहीं खेला जाएगा क्योंकि दोनों मैप आईटी जीता है। ओके, रॉन्ग कॉल। यस, सो इसी के साथ गेम खत्म करेंगे हम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। इसी के साथ रॉकेट लीग भी खत्म होता हुआ। रॉकेट लीग खत्म हो रहा फाइनल एकदम फाइनल, 2 बार फाइनल हो गया, तो फाइनल वाला रॉकेट लीग खत्म होता हुआ। हम लौटेंगे एंटी चेस के साथ कुछ क्षणों में, तो स्टे ट्यून गाइस। बाय बाय।